discuss about the cranial nerves. I strongly feel that this topic is quite extensive, and I have just jotted down the summary of the cranial nerves. The time is really limited to cover up all of the cranial nerves in just 1.5 hours. Anyway, I'll try my level best to make you understand and make this lecture useful. Now, talking about the cranial nerves, first let's see from where do the cranial nerves emerge from the brain. Now, from the brain, there is a very systematic order. Why is there a systematic order? I believe that because we have given them these names, and nomenclature and the numbering are done by human. And so it has been done in a systematic way. No other reason for that I can find. So this is the first cranial nerve, the olfactory, then the optic, second cranial nerve. These two cranial nerves are supposed to be direct extensions of brain substance. And some of the anatomists believe that they should not be called nerves. They are just the extensions of brain tissue itself. We won't go into this, the debate, and we'll take the first cranial nerves, olfactory nerve, and the second one, the optic nerve, as nerves. Then this is the third cranial nerve, which is arising from the medial aspect of the crus cerebri. The crus cerebri, which is part of the midbrain, or the cranial most part of the brain stem. And from here you can see a thin rootlets or thin oculomotor nerve arising on either side. Now, just on the lateral aspect, rather posterolateral aspect of the crus cerebri, is the emergence of the fourth cranial nerve, which is the trochlear nerve. This trochlear nerve is the only nerve which is arising from the dorsal aspect of the brain, and then it curves around the dorsal aspect of the brain to come to the ventral aspect. So on the base of the brain, you can see it over here, but this is not the point of emergence of the fourth cranial nerve from the brain tissue itself. It is emerging from the area of the crus cerebri, which we can't see on this aspect, which is on the other aspect, which is in this picture would be deep down in the picture. So this is the fourth cranial nerve. Then the fifth cranial nerve arises from the ventrolateral aspect of the pons. And this is the thickest of the cranial nerves, as we see the point of attachment over here. And it consists of a motor, small motor root, and a thick sensory root. And as you will appreciate and already would be knowing that there is an extensive area of supply of this nerve. Then the sixth cranial nerve, it is emerging from the junction of the pons and medulla oblongata, or you can say junction of the pons and pyramid. And this is again a thin nerve. You can appreciate from here that the area of the supply of a specific nerve tells you about the thickness of the nerve itself. As oculomotor, trochlear, and abducens, they are supplying just the extraocular muscles. And a few of them are supplying just one extraocular muscle, so their thickness is quite less. Then is the seventh cranial nerve. Seventh and eighth, they emerge together. The seventh is the facial nerve, and then is the vestibulocochlear nerve. In this diagram, you can't appreciate that the seventh nerve is slightly ventral to the eighth nerve, which is in this diagram, it appears as if the eighth and sixth, seventh are at the same level, but they are slightly ventral and dorsal. So the facial, along with its nervus intermedius component, and the eighth nerve, they are arising from the area between the this olive and the posterolateral sulcus. Then is the ninth cranial nerve, which is the glossopharyngeal nerve, which is here just below the emergence of the eighth cranial nerve from the same posterolateral sulcus.
Then below it is the vagus, the 10th nerve, and still from that sulcus are the rootlets of the 11th or accessory nerve, and the hypoglossal nerve, being again a motor nerve, is arising from the groove between the pyramid and olive. Now, in this diagram, you can appreciate that the purely motor nerves are anteriorly placed or ventral, most ventral ones. The mixed nerves are intermediate in position, and the purely sensory nerve would be deeper down, more towards the dorsal aspect of the brain. It is following the pattern which you see in the spinal cord and in the rest of the brain stem, that the purely motor components are ventrally placed, mixed in the middle, and sensory towards the posterior aspect. Now let's see from where do these cranial nerves now emerge from the brain, from the skull. In the skull, this is the anti-ethmoidal foramen, and this is the cribriform plate of the ethmoid bone, which gives exit to the emerging or entering rootlets of the olfactory nerve. Olfactory nerve is its cell bodies from which the nerve fibers emerge. They are present in the olfactory mucosa, which is present in the superior wall of the nasal cavity. And from here, these are just small nerve rootlets which emerge from this foramina, forming the cribriform plate of the ethmoid. And there are about 20 nerves on either side, and they emerge to form a bulb-like or a consolidated structure, which is called olfactory bulb. So from here, cribriform plate of ethmoid will give exit or entrance. We should say entrance, because it is a sensory nerve, to the first cranial nerve. Then the second cranial nerve will pass through the optic canal. The third will pass through the superior orbital fissure, along with the nerves which are going to supply, nerve and vessels as well, which are going to supply the orbit and the contents of the orbit. So this will be oculomotor nerve, trochlear nerve, and abducent nerve. These three are supplying the extraocular muscles, and the components of the orbit itself will be supplied by lacrimal, frontal, and nasociliary branches. These three are the branches of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. And obviously, there will be veins and arteries accompanying it. So these nerves, which are supplying mainly the orbit, which is, I repeat again, third, fourth, and the ophthalmic component of the fifth and the sixth nerve, they are going to pass through the superior orbital fissure. Then we go on to the fifth nerve again. We have dealt with the ophthalmic component. Now let's talk about the maxillary component. Maxillary will pass through the foramen just posterior to the superior orbital fissure, or rather inferior to the superior orbital fissure, and this is the foramen rotunda. Next is the foramen ovale, just adjacent to it, which gives way to the mandibular component of the trigeminal nerve. And along with it, there is lesser petrosal nerve, which we will discuss later when we discuss the rest of the nerve component. Then foramen spinosum is not going to give way to any of the cranial nerves. None does the foramen lacerum. Then talking about the cranial nerves, the next foramen is the internal acoustic meatus, this one. On the petrous part of the temporal bone, this is the prominent foramen, which gives way to the facial and its parasympathetic component, or chorda tympani, and the vestibulocochlear nerve. So the seventh and eighth nerve, they pass through it. Then there is a big foramen, jugular foramen, in the posterior cranial fossa, when you could see inferior to the
postero-inferior to the internal acoustic meatus. The plane of these foramina is quite different, can't be appreciated so well in the diagram, but if you see the skull, the level is quite different. And this jugular foramen is quite a large foramen. So is the superior orbital fissure. These two foramina are quite larger in comparison to the rest of the foramina. The jugular foramen is going to give way to the glossopharyngeal, vagus, and accessory. So these three nerves, 9, 10th, or 11, are going to pass through the jugular foramen, and there is again a relatively narrower passage just close to the foramen magnum. On the side of the foramen magnum, this is the hypoglossal canal, and it gives way to the hypoglossal nerve, or the 12th cranial nerve. Now, another important thing is that the spinal roots of accessory nerve, they pass through the foramen magnum, because they are going to the spinal nerve rootlets are arising from the first upper four segments of the spinal cord, and so is a part of the trigeminal nerve, which is called the spinal nucleus of the trigeminal nerve. These rootlets will pass through the foramen magnum to enter to reach the brain, and so they will pass through the foramen magnum as well. So this was about the exit and superficial attachment of the cranial nerves. Now let's talk about the first cranial nerve. I haven't seen much questions coming from the first cranial nerve in your examination, so we won't discuss the details which are visible in this diagram. This is for postgraduate level if you are studying just the anatomy. So for you, it's important that you know that it may be donated as the direct extension of the brain, as it is arising from the bipolar cells which are present in the olfactory mucosa. And there are about 20 nerves on either side, and they pass through the cribriform plate of the ethmoid bone, and it is concerned with the olfaction sense of smell, and it's a special sensory component. Special sensory, I hope all of you know that the sensations which are related to the special senses: smell, taste, hearing, and vision, and proprioception. Or autonomic is partly included as a part of few components of autonomic nervous system are included as part of this special senses, especially the balance component. And now this is the second cranial nerve, which is the optic nerve. It passes through the optic canal, and again it is called direct extension of the brain, because it arises from the bipolar cells which are present in the retina, and from the retina these nerve cells, processes of these nerve cells, they combine with each other, they travel together to form the optic nerve, and then the fibers from the nasal half, they cross each other, and from the lateral half or temporal half, they do not cross, and they form the fibers which are supposed to cross. They are crossing in the optic chiasma, so crossing over or a junction is formed, which is called optic chiasma, and then the crossed fibers and the temporal uncrossed fibers travel further to reach the lateral geniculate body, and this traveling bundle is called optic tract. Now the fibers relay in the lateral geniculate body, and the next fibers that arise is called optic radiation, which is, these fibers are projected to the optic or visual cortex, which is present in the area 17, 18, 19 of the occipital lobe.
Now, I'm not going into the details, and I'll stick to the areas which usually are covered in the questions which come in your examination. Now, the important thing regarding that are these lesions. What is the significance of these lesions, or what is the anatomical basis of these lesions? If you have got a problem somewhere in the retina, then there will be a blind area or an area or a defect in the field of vision, depending upon where the lesion is. So if the lesion is in the retina, you will see that you perceive just a blind spot. But if there is not the blind spot which is there in the retina, but you see blind spot, I mean a defect in the field of vision. If there is an injury to the optic nerve because of any cause, then it will reflect as loss of vision of one eye, and there will be complete loss of vision, complete loss of visual field in one eye. At this point, I want you to notice that the image which is formed on the temporal half of the retina is actually from the nasal field of vision. And the image which is formed on the nasal half of the retina is that of the temporal field of vision. So you have to keep in mind that the rays which are falling from the temporal part of the field of vision, they are falling on the nasal half of retina, and vice versa. So the lesion over here is reflected in the same way. If there is an injury or a defect at the middle part or the medial part of the optic chiasma, then the nasal fibers are affected, and the nasal fibers are getting the image from the temporal half of the field of vision. So there will be bitemporal hemianopia, or that means that both of the eyes will not be able to see the temporal half of field of vision. That tells that the nasal fibers have been damaged from the both eyes. Then if there is a lesion of the optic tract, as is there in the number 5. Now, in number 5, you will see that there will be homonymous hemianopia. And one of the field of vision, one half of the nasal half of the field of vision and half of the temporal half of the field of vision will be affected. And again, you can depict what is the reason for it, knowing the same background. इसमें important point ये है note करने वाला, if you see that the lesion at number 8 and number 5, that is optic tract or the optic radiation. If whole of the optic radiation is severed or whole of the optic tract is severed, the result will be same, homonymous hemianopia. And if there is lesion of few of the fibers of the optic radiation, as is in the 6th number, then there will be the fibers from the upper half of visual field, they are present in the outer part of the optic radiation. So upper half of the field of vision will be affected if the lateral fibers are severed or the outer fibers are severed. But if the inner fibers of the optic radiation is damaged, then you will see loss of vision in the lower quadrant of the field of vision. Then if there is a defect at the level of optic
cortex or the occipital cortex, then you will see the mechanism of sparing of macula. And because this is a small area, the macula is represented on either side of the optic cortex, so it will be spared. There will be sparing of the macula, but the rest of the field of vision will be gone for that eye. So these are the questions which are usually asked. इसको आपने रट्टा लगाना है या समझ के याद करना है, depends upon you. Now let's talk about the third cranial nerve. As we have discussed already, that it passes through the superior orbital fissure, and along with the other cranial nerves which are going to supply the orbit and the structures present in the orbit. It has got a general somatomotor component and a parasympathetic component. All of you would be knowing that the parasympathetic component is reflected in the attention-vascular nucleus of the oculomotor nerve, which is also present in the midbrain, and so is the nucleus of the third cranial nerve, which is present in the ventral part of the midbrain. The general somatic motor component, or the muscles of the supplying the muscles of the eyeball, are all the recti except the lateral rectus and the oblique, the inferior oblique muscle, and the levator palpebrae superioris. The parasympathetic component is supplying the sphincter pupillae and ciliary muscle through the short ciliary nerves. We will just see how the short ciliary nerves reach the sphincter pupillae and the ciliary muscle. The branches of the oculomotor nerve are, I will very briefly tell you the paths or the tract of the nerve itself, so that you have an image in your mind that from where does the nerve emerge and in which direction is it going. But you don't get questions regarding the details of the route of the cranial nerve, because just the important clinical aspects are being asked. So we won't waste our time on tracking the nerve in relation to each and every muscle and in relation to each and every nerve and vessel. Broadly speaking, you should know from where is the nucleus located. So you know that it is in the midbrain. From here, it comes out of the skull through the superior orbital fissure. Before reaching the superior orbital fissure, it is traveling through the wall of the cavernous sinus, along with the trochlear, trigeminal, and not the whole component of the trigeminal, but the ophthalmic component of the trigeminal and the abducent nerve. It travels in it, and then through the superior orbital fissure, it enters the orbit, and it divides abruptly into two divisions. The superior division supplies the levator palpebrae superioris and the superior rectus. The levator palpebrae superioris is responsible for opening the eyeball orbital fissure, or you can say lifting the upper eyelid. So if this division is damaged, then this will be malfunctioning of the superior rectus muscle, which raises or rotates the eyeball upwards and is responsible for adduction. And if there is drooping of the upper eyelid as well, or problem in opening the eyes, then it means that there is problem with the superior division of the oculomotor nerve. But if the nerve itself is damaged, then the rest of the recti and the inferior oblique will also be affected. And the dilator pupillae is also receiving its sympathetic nerve supply from the inferior division. Now, this is the superior division or the superior branch.
and it is going to supply the levator palpebrae superioris and the superior rectus. The inferior branch is supplying, the first branch emerges to the medial rectus, then it is supplying the inferior rectus and inferior oblique. And on its way, it is attached to the ciliary ganglion. From the ciliary ganglion, the nerves that will arise will be the short ciliary nerves. And as you must have noticed in this diagram, the parasympathetic component, which is coming from the, which is attached to the Edinger-Westphal nucleus, it will be relaying in this, the fibers will be relaying in the ciliary ganglion and then will supply the ciliary muscle and the sphincter pupil. The short ciliary nerves are going to supply these components. The trochlear nerve, its course is almost similar to the third cranial nerve, and it's again the somatic motor component, and it doesn't carry any autonomic component, and it is supplying just the superior oblique muscle. Important thing is that the superior oblique muscle, because it is obliquely placed, you must have studied it in the functions of the extraocular muscles, that because it is attached to the eyeball behind the central axis of the eyeball, that's why it pulls the eyeball in such a way that although it is present on the superior aspect, it will be responsible for the depression of the eyeball as well as abduction, and it also produces intorsion. Now comes the most lengthy part of the cranial nerve components. एक vagus बहुत लंबी nerve है, एक fifth nerve और एक facial nerve. लेकिन इन सब में से मेरा ख्याल है fifth nerve जीत जाती है. So let's talk about each and every component separately. First, we will talk about the ophthalmic nerve. यहाँ पे I'm sorry for this, ये 6 लिखा हुआ इसमें. It's लगता है इसको लिखा हुआ, लेकिन असल में है ये 5th का first component. तो ये this is the right way of writing it. कि 5th का first component is the ophthalmic component. Its branches are meningeal, frontal, lacrimal and nasociliary. आपको आमतौर पे जो एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये कि आपको ये याद रहे कि frontal, lacrimal और nasociliary 3 branches हो जाती हैं. Lacrimal is the most laterally placed और ये ज़्यादा सप्लाई करती है lacrimal gland को, plus the skin over the lacrimal gland. Then is the frontal nerve. Frontal nerve divides into supratrochlear and supraorbital, and it supplies the middle part, this part of the forehead and nose. So it will be supplying the frontal air sinus, the scalp in the anterior portion, and the forehead and the medial part of the upper eyelid. यानी सारा का सारा ये medial component जो है ये frontal nerve supply कर रही है through its supraorbital and supratrochlear branches. Supratrochlear being medial and supraorbital just close to it. And nasociliary nerve is the third nerve branch of the ophthalmic division of the trigeminal nerve. इसकी branches जो हैं वो anterior ethmoidal, posterior ethmoidal, infratrochlear. These are the 3 main branches. उसके अलावा इसके long ciliary nerves हैं. Long ciliary nerves are responsible for general sensory supply to the iris, cornea, iris and cornea. और स्क्लीरा को भी ये सप्लाई कुछ एरिया को करती हैं, कुछ को शॉर्ट सिलियरी नर्व सप्लाई करेंगे. Now there is a communicating nerve also, which is giving attachment to the ciliary ganglion, and the ciliary ganglion is an autonomic ganglion. इसके बारे में हम फिर दोबारा से पढ़ेंगे multiple times. So now you should remember that it is attached to the
nasociliary nerve through a communicating nerve, which is holding this ciliary ganglion close to the one of the rectus muscles. The main component is के main branches जो है posterior ethmoidal, anterior ethmoidal and infratrochlear, and फिर उसके बाद long ciliary nerve, और it is going to supply meninges, orbit, both cornea and conjunctiva, the nasal cavity, its lining, the forehead, the middle of the nose, and the frontal air sinus. These areas are supplied by these branches of the ophthalmic division of trigeminal nerve. Then the second component of the fifth nerve is the maxillary. Maxillary की branches जो हैं again meningeal branches, और एक important branch इसकी infraorbital है. Actually, when you trace the course of the maxillary nerve, its continuation forms the infraorbital nerve. तो ये भी कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि is infraorbital nerve a branch of maxillary nerve, or is it the continuation of the maxillary nerve? So the correct answer is that as the maxillary nerve enters the this infraorbital canal, it is named as infraorbital nerve, and it emerges from the infraorbital foramen, and it is just the continuation of the maxillary nerve into its cutaneous component. Before entering into the infraorbital canal, it has already given posterior superior and anterior superior, and also in some books it's middle superior alveolar nerve. So in other words, it's going to supply the teeth, the gums of the upper jaw, and it also gives sensory route to the pterygopalatine ganglion, and it gives greater and lesser palatine nerves, which are present again in the palate and entering through the greater and lesser palatine foramina, which are present on the horizontal plate of the maxilla. Then what are these branches going to supply? They are going to supply the maxillary air sinus. So this is the area which is going to be supplied by the maxillary nerve. ये cutaneous area तो हम ये गिनते हैं, लेकिन आप ये याद रखें कि इससे deep भी जो structures हैं, इससे deep अगर आप skin और muscles के नीचे जाएं, तो you will see the maxillary air sinus. So deep areas भी इस area के maxillary nerve supply कर रही है, और उसी से नीचे आप gums and teeth of upper jaw जाएं, तो वो सारे posterior, superior, middle superior and anterior superior alveolar के through वो supply हो रही है. फिर bony part of the cheek through its infraorbital branch जो यहाँ पे emerge होगी, वो भी cheek को supply कर रही है, और zygomatic branch भी इसकी supply करेगी. फिर meninges, वो तो हर component की एक meningeal branch पहले arise करती है, और जो area जहाँ से ये निकल रही होगी उसके आसपास की meninges को ये supply कर रही है. So the the maxillary division gives infraorbital, nasopalatine, zygomatic and superior alveolar nerve. Superior alveolar के आगे components मैंने आपको बताया. Zygomatic nerve जो है वो zygomatico temporal and zygomatico frontal nerve में divide कर देती है, और वो skin इस area की उसको supply करेगी. And we have already discussed that it passes through the foramen rotunda. Now let's talk about the mandibular component. फिर उसकी उसी तरह से mandibular component की meningeal branch सबसे पहले हुई, फिर auriculotemporal, buccal, lingual and inferior alveolar. और ये इसका sensory area of supply cover कर रही हैं ये branches में. जो motor component है वो एक motor root पहले ही anterior root अलग हो जाएगी जो के muscles को supply करेगी. So mandibular nerve is the nerve out of the division in which the motor component of the fifth nerve is represented. और ये किसको supply कर रही है? Muscles of mastication को, which are lateral and medial pterygoid, temporalis and masseter.
उसके अलावा ये जो सप्लाई कर रही है वैक्सीनेटर को कर रही है, टेंसर टिम्पनाई एंड टेंसर पैलेटाई, माइलोहायोइड एंड एंटीरियर वेरियोटाई गैस्ट्रिक। अब इन मसल्स को आप अगर देखें तो आपको एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन ट्रेस करना पड़ता है. When you talk about the embryological origin, so these are the muscles which are arising from the first branchial arch. इसीलिए इस सप्लाई को ब्रैंकियोमोटर भी कहते हैं या विसरल एफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं, सॉरी विसरल इफरेंट फाइबर्स भी कहते हैं. विसरल इफरेंट इसलिए क्योंकि ये ब्रैंकियल एपरेटस को रिप्रेजेंट कर रही है, और विसरल इफरेंट का ही दूसरा नाम ब्रैंकियल मोटर भी है, जो नाम यहाँ पे यूज किया. सो out of these muscles, the muscles which are coming from the first pharyngeal arch, the mesoderm of the first pharyngeal arch, they are supplied by these branches which are representing the motor or brachiomotor component of the trigeminal nerve. और इसमें फिर उसके बाद इसका जो मिक्स्ड ऑटोनॉमिक कंपोनेंट है या ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई भी इसमें से कन्वे हो रही है, और जो फाइबर्स आ रहे हैं विच आर पासिंग थ्रू द ब्रांचेस ऑफ the mandibular division of the trigeminal nerve, they are actually coming from the cauda tympani of the seventh nerve. तो मैं seventh nerve के cauda tympani component, the fibers which are destined for the for supplying the taste fibers to the anterior two-thirds of the tongue, they will be traveling via the lingual nerve, which is a branch of the mandibular division of trigeminal. तो इसलिए मैंडिबुलर डिवीजन के जनरल सेंसरी कंपोनेंट मेनिंजेस को म्यूकोसा ऑफ द ओरल कैविटी एंड पैलेट को जा रहा है, एंड एंटीरियर टू-थर्ड ऑफ द टंग को जनरल सेंसेशंस भी जा रही हैं और स्पेशल सेंसेस भी जा रही हैं. जनरल सेंसेस लिंगुअल के जो ट्राइजेमिनल कंपोनेंट के थ्रू ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में जाएंगी, और जो स्पेशल सेंसेस है एंटीरियर टू ऑफ द टंग से टेस्ट के फाइबर्स, वो कॉडा टिम्पनाई के थ्रू जो है रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस में चले जाएंगे, विच इज द न्यूक्लियस ऑफ द ट्रैक्टस सॉलिडेरियस. फिर गम्स एंड टीथ ऑफ द लोअर जॉ को, जैसे मैक्सिलरी ने अपर जॉ के गम्स एंड टीथ को किया था, इसी तरह से ये इंफीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर टीथ और गम्स को सप्लाई करेगी. एंड ऑल ऑफ यू नो कि इंफीरियर एल्वियोलर नर्व मैंडिबुलर फोरामेन और मैंडिबुलर कैनाल में से गुजर के और ये सारे मैंडिबुलर टीथ को सप्लाई कर, जो मैंडिबल में से यहाँ से मैंडिबुलर फोरामेन में एंटर हुई और फिर वो ट्रेवल करती गई, साथ साथ लोअर टीथ को सप्लाई करती गई. यहाँ इंसाइसिव जो ब्रांच देने के बाद इट विल कम आउट ऑफ द मेंटल फोरामेन एज मेंटल एंड इट विल सप्लाई, इट विल बिकम कुटेनियस एंड सप्लाई द स्किन ऑफ द चिन. अब एक और जिसका बहुत ज्यादा जिक्र आता है, दैट इज द ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व. ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व जो है, इसने एक तो पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई करने के लिए फाइबर्स इसमें से आएंगे, प्लस इट विल गिव सप्लाई टू द मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन एज वेल. इसमें ये है कि इसके शुरू के कंपोनेंट से ही नर्व टू medial pterygoid and then nerve to lateral pterygoid, nerve to tensor tympani and tensor palatii ये arise करेंगी, और later part of the nerve में जो this temporalis muscle and masseter will be supplied. इससे हम रिवाइज कर लेते हैं all the three main divisions of the trigeminal nerve.
ट्राइजेमिनल गैंग्लियन आपको पता है कि एपेक्स ऑफ द पीटरस पार्ट ऑफ द टेम्पोरल बोन पे लोकेटेड है। द नर्व के न्यूक्लियस को अगर हम ट्रेस करें तो दिस ट्राइजेमिनल नर्व न्यूक्लियस इज प्रेजेंट थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम, और इसमें स्पाइनल कॉर्ड के अपर 4 सेगमेंट से स्टार्ट करके मिड ब्रेन तक इसके न्यूक्लियाई हैं। द न्यूक्लियाई मेनली यू नो आर द nucleus of the spinal tract of the trigeminal nerve, then principal sensory nucleus, then motor nucleus, then mesencephalic nucleus. तो ये सारे nuclei जो हैं वो थ्रू आउट द ब्रेन स्टेम है। इसमें से न्यूक्लियस ऑफ स्पाइनल ट्रैक्ट और सेंसरी प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियाई ये अपर 4 सेगमेंट्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड मेडुला में है। फिर उसके बाद मोटर न्यूक्लियस एंड द मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस दे आर प्रेजेंट इन द मिड। और पॉन्स में भी इसका वही प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस कंटिन्यू करेगा फ्रॉम द it will be continuing upwards from the medulla. तो इसलिए पॉन्स में भी ये न्यूक्लियस इसी तरह से लोकेटेड होंगे। सो इन सब न्यूक्लियाई में से मोटर फाइबर्स आप कहेंगे इमर्ज करते हुए, और जो सेंसरी फाइबर्स हैं ऑब्वियसली दे विल बी going back to those nuclei. So they are traveling in the main route of the trigeminal nerve, which we saw emerging from the ventrolateral aspect of the pons. उसमें से निकल के ये respective foramina में से ये apex of the petrous part of the temporal bone के ऊपर आए, वहाँ पे trigeminal ganglia which is half bathed in the cerebrospinal fluid, जिसको कहते हैं trigeminal cave में लाया कर रहे हैं, and then from it the 3 main divisions of the nerve emerge. 3 main divisions. First one is the ophthalmic, which will pass through the supraorbital fissure and divide into frontal, nasociliary, and lacrimal. Nasociliary will give attachment to the ciliary ganglion, and the ciliary ganglion will provide short ciliary nerves, which will supply the sphincter pupillae and the ciliary muscle. Or frontal will divide into supraorbital and supratrochlear, and the supraorbital will pass through the supraorbital foramen, and they will supply the skin of the forehead, the root of the nose, the upper medial part of the upper eyelid, and so on. The nasociliary component will give rise to posterior and diethmoidal nerves, and the infratrochlear nerve, infratrochlear, will supply the skin on the medial aspect of the upper eyelid. Of the lower eyelid. And then there will be lacrimal component. Lacrimal component is going to supply the lacrimal gland and the skin over the lacrimal gland. अभी हम सिर्फ skin over the lacrimal gland की बात करते हैं। इसके अंदर जो supply to the lacrimal gland के लिए fibers आ रहे हैं, they pass a long way through, and they are hiking through various nerves, and terminally they come through the lacrimal nerve to supply the lacrimal gland. इससे पहले ये zygomatic nerve से होके आ रहे हैं, और कैसे ये ganglia में से गुजरेंगे, this we will see later. Then is the maxillary component of the trigeminal nerve. Maxillary की branches क्या हैं? Zygomatic, जिसका मैंने बताया zygomatico-temporal and zygomatico-facial में divide होके ये skin को supply कर देंगी. Then its continuation is the infraorbital, which passes through the infraorbital canal, and infraorbital comes out to become cutaneous as the infraorbital nerve. और इस area को ये cheek, अपर चीक के एरिया को और लोअर आईलिड के लैटरल पार्ट को ये इंफ्राऑर्बिटल नर्व सप्लाई करेगी. देन फ्रॉम द nasociliary nerve the lesser palatine nerves arise, and to which is attached the pterygopalatine ganglion, and then the superior alveolar branches, which will be posterior superior and anterior superior alveolar nerves, which anastomose with each other, and they all supply the upper or maxillary teeth. Third component is the mandibular component. Iski buccal, lingual, and this inferior alveolar nerve. Inferior alveolar mandibular canal में से pass करके it is going to supply
the lower teeth and the gums, and it will come out through the mental foramen and become cutaneous. उसके अलावा lingual जो है उसके साथ cauda tympani के fibers travel कर रहे हैं to supply secretomotor fibers through the submandibular gland to the through the submandibular ganglion to the submandibular and sublingual gland, and the lingual will also convey general sensations to the anterior two-thirds of the tongue. The cauda tympani will also carry taste fibers from the anterior two-thirds of the tongue. So the lingual nerve has got various components. जो motor component है, it will travel along with the inferior alveolar nerve, and it will supply all the muscles which are derived from the first pharyngeal arch, so anterior valley of digastric and nerve to the mylohyoid. They will actually, this nerve is called nerve to mylohyoid, or its first segment it will give auriculotemporal nerve, and then to the tensor tympani and the tensor palatii over here, and it will give branches to the parotid gland, which are relaying in the aortic ganglion. Aortic ganglion में fibers originally they are coming from the glossopharyngeal nerve through the tympanic plexus, और उसके बाद aortic ganglion में आएंगे, and the aortic ganglion is attached to the this mandibular division of the trigeminal nerve just as it comes out of the foramen ovale. तो foramen ovale के बिल्कुल नीचे aortic ganglion hang कर रहा होता है with the mandibular division, और इसके अंदर fibers, actually secretomotor fibers, are coming through the branches of the glossopharyngeal nerve, and they relay over here, and they supply the parotid gland through the auriculotemporal branch of the mandibular nerve. और उसके अलावा ये इसी में से mandibular में से ही जो sensory branches arise करेंगे, which are superficial temporal branches, और ये supply करती हैं skin over the auricle or posterior part of the this occipitofrontalis muscle. उसके superficially जो skin है और mastoid process के ऊपर जो skin है, उस सारे को ये वाली nerve supply करेगी. Now, if we see this diagram, this is regarding the cutaneous supply. लेकिन मैं आपको फिर यही कहूँगी कि आपको याद करना आसान होता है अगर आप याद रखें कि इन्हीं areas में deeper parts are also supplied by the same division of the trigeminal nerve, जिसमें superficially आपको ये cutaneous branches नजर आती हैं, लेकिन deeper level पे आप imagine करें अपने अंदर की कौन सी air sinus है पीछे, और कौन से important structures हैं oral cavity के जिनको इन्हीं nerves ने supply करना होगा. तो these are the cutaneous branches. अगर question कुछ इस तरह से आए कि cutaneous branches कौन सी हैं, तो these are the cutaneous branches of the ophthalmic division: supraorbital, supratrochlear, lacrimal, just supplying a small area on the lateral part of the upper eyelid, यानी जहाँ lacrimal gland वाला area है उसी के ऊपर की skin. Then infratrochlear and external nasal for supply to the upper eyelid and the bridge of the nose, for the middlemost part of the nose. Maxillary nerve is, इसकी मैंने आपको बताया था सबसे important continuation है this infraorbital, और उसके अलावा zygomatic branches यहाँ दो दिखाई गई हैं, zygomatico-temporal and zygomatico-facial. फिर mandibular component में this is the auriculotemporal, और जो कि temporal branches देगी to the temple, and then is the buccal nerve and the mental nerve. Mental nerve अभी बताया था, it is the continuation of the inferior alveolar nerve, और जब ये mental foramen से बाहर निकल के cutaneous हो जाएगी. इसी तरह से buccal nerve vaccinator को और deeper component को supply करने के बाद it will become
cutaneous to supply the middle of the cheek area. Now, these are the branches which are supplying the greater occipital, lesser occipital, or greater auricular cutaneous supply of the scalp में आ जाएंगे. Next, abducent nerve वैसे तो पहले ही हमें कर लेनी चाहिए थी along with the third and fourth nerve, लेकिन हम number wise चल रहे हैं. तो this is the nerve which is going to supply the lateral rectus muscle only. तो ये भी जनरल सोमैटिक मोटर कंपोनेंट है, इसमें भी कोई पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट नहीं है. एंड इट इज पासिंग थ्रू द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. ऑब्वियसली इट विल बी पासिंग थ्रू द lateral wall of the cavernous sinus. एंड उससे पीछे हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि कहाँ इसका न्यूक्लियस है. इट्स न्यूक्लियस इज इन द मिड ब्रेन at the level of the inferior colliculus. जो oculomotor nerve का nucleus at the level of superior colliculus है, और trochlear का nucleus at the level of inferior colliculus है. And then it emerges from the dorsal aspect of the brain, then curves around the crus cerebri, the posterior aspect से फिर ये पूरा around the midbrain घूम के ventrally आ जाती है and emerges as attached to the brain from the lateral aspect of the crus cerebri. और उसके बाद इसने कैवर्नस साइनस में चला जाना है, और कैवर्नस साइनस में मेनिंजियल कवरिंग के अंडर होते हुए it will go into the superior orbital fissure and supply the lateral rectus muscle. इसका कोर्स भी सिंपल है और सप्लाई भी सिंपल है. इम्पोर्टेंट बात यह है कि lateral rectus का फंक्शन क्या है. lateral rectus का फंक्शन है abduction of the eyeball, यानी laterally pull करना. रेक्टाई जितने भी हैं वो स्ट्रेट एक्ट करते हैं. सुपीरियर रेक्टस ऊपर की तरफ, इंफीरियर नीचे, और मीडियल रेक्टस जाहिर है मीडियली और लेटरल रेक्टस लेटरली. और ओब्लिक जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रन कर एक्शन होता है. इंफीरियर ओब्लिक सुपीरियरली पुल करेगा, सुपीरियर ओब्लिक इंफीरियरली पुल करेगा. उसके अलावा सुपीरियर ओब्लिक जो है एडक्शन करेगा, इंफीरियर ओब्लिक एबडक्शन करेगा. और उसके अलावा इंटॉर्शन मीडियल वाले मसल्स इंटॉर्शन करते हैं, लैटरल वाले मसल्स एक्सटॉर्शन करते हैं. Now coming to the seventh cranial nerve, which is the facial nerve. Again, quite a lengthy nerve. इसमें all of you know, और अभी हमने डिस्कस भी किया था, इसका न्यूक्लियस जो है वो क्योंकि पॉन्स में है, तो पॉन्स में से इमर्ज करने के बाद इट विल, और उसके अलावा पॉन्स में इसका मोटर कंपोनेंट है, और इसका सेंसरी कंपोनेंट या और पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट जो है दैट विल बी in the medulla oblongata in the form of nucleus of tractus solitarius. और उसके अलावा भी एक दो न्यूक्लियाई जो कि आपसे नहीं पूछे जाते. So the fiber type are special sensory fibers, general sensory fibers. Special sensory में obviously taste आ गया. General sensory में अभी हम ये सारा एरिया देख लेंगे. Then branchiomotor, because this is the nerve of the second arch. So the nerve, the muscles हैं जो second arch से arise कर रहे हैं, उनको ये सप्लाई करती है. तो although it's motor supply, but it is called branchiomotor or visceromotor या visceral efferent. फिर पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जिसको सिक्रीटोमोटर भी कहते हैं, वो फाइबर्स भी इससे ट्रेवल करेंगे. ब्रैंकोमोटर कंपोनेंट जो है, दिस इज मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन, पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक एंड स्टाइलोहाइड. एक ही ब्रांच होती है जो पोस्टीरियर वैली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहाइड को सप्लाई करती है एज इट इमर्जेस थ्रू द दिस स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन इन इट्स कोर्स. और फिर स्पेशल सेंसरी कंपोनेंट में टेस्ट फाइबर्स फ्रॉम द एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग. जनरल सेंसरी कंपोनेंट में जस्ट ईयर का थोड़ा सा एरिया जो है, यहाँ से एरिया, ये जब जो फेस को सप्लाई करते हुए, और यहाँ से फेस में तो मसल्स को सप्लाई कर रही है, स्किन को ट्राइजेमिनल कर रही है, लेकिन इतना सा एरिया जो स्किन ऑफ द ऑरिकल एंड स्किन ऑफ द स्मॉल एरिया बिहाइंड द ईयर, इससे जनरल सेंसेशंस ये लेके जाती है. पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट लैक्रिमल ग्लैंड को जा रहा है, और जो कि हमने अभी ट्रेस किया था कि
लैक्रिमल ग्लैंड को अल्टीमेटली फाइबर्स जो हैं वो जाइगोमेटिक ब्रांच ऑफ द नेजोसिलियरी से, फिर उसके बाद लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द फ्रंटल के थ्रू जाने। तो दो कंपोनेंट्स हम देख चुके हैं। इससे पीछे का कंपोनेंट जो है वो कॉर्डा टिम्पनाई से आना है, एंड विल सी हाउ इट गोस देयर। सबमैंडिबुलर ग्लैंड और सबलिंगुअल ग्लैंड का हम अभी ट्रैक देख चुके हैं कि इन दोनों ग्लैंड्स को सप्लाई करने के लिए बक्कल जो लिंगुअल नर्व के थ्रू कॉर्डा टिम्पनाई के फाइबर साथ कन्वे हो रहे हैं टेस्ट फाइबर्स के लिए, और उसके अलावा सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में फाइबर्स जाएंगे फॉर सप्लाई सिक्यूटोमोटर फाइबर्स टू द सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, and they are also traveling through the chorda tympani. The mucous membrane of the nasopharynx, hard and soft palate. इनको भी parasympathetic fibers इसी जो gland में रिले करने के बाद जो fibers distribute होंगे, those will be actually coming through the this parasympathetic component, which is the chorda tympani of facial nerve. Branches इसकी क्या हैं? ये आपको सबको याद होता है बहुत अच्छी तरह से कि इसकी एक तो शुरू में मेनिंजियल ब्रांच होगी, फिर इंटरनल ईयर के अंदर इसकी जो ब्रांचेस हैं, एक तो नर्व टू स्टेपिडियस है, एक ग्रेटर पेट्रोजल है, और एक उसके अलावा ग्रेटर पेट्रोजल, नर्व टू स्टेपिडियस, और तीसरी यही कॉर्डा टिम्पनाई। तो तीन ब्रांचेस जो हैं ईयर में, व्हेन इट पास it enters the internal auditory meatus, then it travels through the facial canal in the posterior wall, first in the medial wall, then in the posterior wall of the middle ear cavity, and then it comes out through the ear. जब उसका vertical part होगा, उसमें से ये stylomastoid foramen से बाहर आएगी। स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से बाहर आते ही it gives a branch to the posterior belly of the digastric and the stylohyoid muscle, जो के नर्व टू स्टाइलोहाइड भी जिसको कहते हैं, इन दोनों को सप्लाई करके फिर इसने पेरोटिड ग्लैंड के अंदर आ जाना है, और पेरोटिड ग्लैंड के अंदर इसका इट डिवाइड्स इनटू मेन three branches, 3 to 4 branches, और फिर वो दोबारा कंबाइन कर देती हैं ब्रांचेस, और फिर anterior pole of the parotid gland से they merge like these branches, 5 branches. ये सबसे ऊपर वाली temporal हो गई, फिर zygomatic, फिर buccal, फिर mandibular जिसको marginal mandibular भी कहते हैं, और फिर cervical. These 5 branches are going to supply the muscles of the facial expression in the areas which are underneath this. उसके बाद इसके जो parasympathetic components, which the nerves which arose in the middle ear cavity, those are the greater petrosal nerve and chorda tympani. और ear के अंदर ही जो एक motor nerve emerge करेगी, that is the nerve to the stapedius muscle. और फिर इसके बाद जो इसकी सेंसरी नर्व है, जब ये यहाँ से स्टाइलोमास्टोइड फोरामेन से निकल के ये पोस्टीरियर बेली ऑफ डायगैस्ट्रिक और स्टाइलोहाइड को ब्रांच देती है, तो साथ ही ये एक ब्रांच देती है which is posterior auricular nerve, and this posterior auricular nerve travels upwards and supplies the skin over the auricle and skin posterior to the auricle. तो ये सारा भी इसका small area of sensory, general sensory supply भी है. So this diagram will summarize the facial nerve again. एकदम से बड़ी खौफनाक diagram लगती है, लेकिन आप एकदम से घबराइएगा नहीं इसको देख के. This is all the revision of what we have already discussed up till now. अब इसमें ये देखिए कि internal acoustic meatus से जब ये enter करती है into the middle ear, as it is traveling in the canal, it gives a ganglion. The cell bodies, they relay in a ganglion which is called a geniculate ganglion, क्योंकि ये curved सा kidney shaped या knee shaped ganglion होता है, इसलिए इसको geniculate ganglion कहते हैं. उसमें से जो nerve arise करेगी, that will be the greater petrosal nerve. Greater petrosal nerve will join with the deep petrosal nerve.
डीप पेट्रोजल जो है वो सिंपैथेटिक कंपोनेंट होता है, ग्रेटर पेट्रोजल के अंदर पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट है। अब ये बाहर कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द हाइटस ऑफ द फेशियल कैनाल, फेशियल कैनाल के अंदर से। मैंने आपको बताया था एज इट ट्रेवल्स थ्रू द ईयर इट इज गोइंग टू गिव 3 ब्रांचेस। तो जाहिर है वो कोई छोटे छोटे हाइटस में से बाहर निकलेंगी। तो वन ऑफ द हाइटस इज गिविंग एग्जिट टू द ग्रेटर पेट्रोजल नर्व, और ये ग्रेटर पेट्रोजल नर्व जो है ये फिर नर्व ऑफ द टेरिगॉइड कैनाल बनाएगी बाय जॉइनिंग विद द डीप पेट्रोजल नर्व, जो कि सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से along the middle meningeal artery जो plexus होते हैं वो मिडिल या सेसरी मेनिंजियल दोनों में से किसी के अराउंड, मेरे ख्याल मिडिल मेनिंजियल ही थी, उसके अराउंड जो प्लेक्सेस हैं उनसे डीप पेट्रोजल बनेगी एंड दे फॉर्म द नर्व ऑफ द टेरिगॉइड कैनाल. Nerve of the pterygoid canal will then relay in the ganglion which is the pterygopalatine ganglion. अब टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन कहाँ पड़ा हुआ है? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन पड़ा हुआ है टेरिगोपैलेटाइन फॉसा में, एंड इट इज हैंगिंग विद द रूटलेट्स ऑफ द मैक्सिलरी नर्व. तो इसलिए इसने मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस के थ्रू फर्दर डिस्ट्रीब्यूट होने, और मैक्सिलरी नर्व की ब्रांचेस के थ्रू जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो पीट्रोटिम्पैनिक फिशर के थ्रू बाहर निकलेंगे और मैक्सिलरी नर्व के जाइगोमैटिक ब्रांच में ट्रेवल किए. जाइगोमैटिक ब्रांच से फिर ये ट्रेवल किए इनटू द लैक्रिमल ब्रांच ऑफ द लैक्रिमल किसकी ब्रांच थी? नेजोसिलियरी की, ऑफ्थेल्मिक की ब्रांच थी. तो ऑफ्थेल यानी इसमें नर्व्स कितनी सारी आ गई, सारी नर्व सप्लाई में. इसीलिए ये एग्जामिनर्स का बड़ा फेवरेट बन जाता है. शुरू में सेलिवेटरी न्यूक्लियस से लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस जिसको सुपीरियर सेलिवेटरी न्यूक्लियस भी कहते हैं, सुपीरियर सेलिवेटरी और लैक्रिमेटरी न्यूक्लियस से सेवंथ नर्व या कॉर्डा टिम्पैनाई के थ्रू, कॉर्डा टिम्पैनाई से ग्रेटर पेट्रोजल, ग्रेटर पेट्रोजल से नर्व ऑफ द टेरिगॉइड कैनाल, यहाँ पे और फिर नर्व ऑफ द टेरिगॉइड कैनाल टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन. यहाँ पे सेवंथ नर्व का पार्ट खत्म हो गया. टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन हैंग कर रही है मैक्सिलरी नर्व से, और इसमें से फिर फाइबर्स आगे मैक्सिलरी नर्व के थ्रू उसकी जाइगोमैटिक ब्रांच तक मैक्सिलरी नर्व ले गई. अब जाइगोमैटिक ब्रांच ने यही फाइबर्स हैंड ओवर कर दिए अपनी फ्रेंड जो कि ब्रांच थी nasociliary branch of the ophthalmic division of the trigeminal. Ophthalmic division of the trigeminal nerve की आगे lacrimal branch निकली जिसने lacrimal gland तक ये fibers पहुंचा दी. And इतने सारे nerves के contribution की वजह से आप सबके लिए भी और पढ़ाने वालों के लिए भी मसला हो गया. Anyway, अभी कॉर्डा टिम्पैनाई का किस्सा खत्म नहीं होता. कॉर्डा टिम्पैनाई ने अब बाकी ब्रांचेस के थ्रू भी अपनी जो पैरासिम्पैथेटिक और सीक्रेटोमोटर फाइबर्स एज वेल एज स्पेशल सेंसरी फाइबर्स कलेक्ट करने. इन अदर वर्ड्स मोटर फाइबर्स, सीक्रेटोमोटर फाइबर्स इस डायरेक्शन में जाएंगे और वापस आएंगे स्पेशल सेंसरी फाइबर्स. तो अब हम फिर से वापस जाते हैं जेनिकुलेट गैंग्लियन पे. ग्रेटर पेट्रोजल निकलने के बाद दिस वाज द फर्स्ट नर्व इमर्जिंग फ्रॉम द जेनिकुलेट गैंग्लियन थ्रू द हाइटस ऑफ द फेशियल कैनाल. अभी फेशियल कैनाल के अंदर फेशियल नर्व ट्राइबल कर रही है और फिर वो ब्रांच देगी nerve to stapedius, which is going to supply the stapedius muscle, which is one of the muscle of the which is attached to the stapes, and it's responsible for pulling the footplate of stapes. इसलिए ये हाइपर एक्यूसिस को या लाउड वॉइसेस को डैम्पन डाउन करता है. इसीलिए अगर इस नर्व को कोई डैमेज हो जाए या फेशियल नर्व को डैमेज हो जाए इन इट्स पैसेज थ्रू द फेशियल कैनाल तो ऊंचा सुनाई देने लग जाएगा, बहुत ज्यादा ऊंची आवाजें तंग करने लगेगी. क्यों? बिकॉज द नर्व टू स्टेपिडियस इज डैमेज्ड एंड टेस्ट फाइबर्स डिस्टर्ब होंगे और उसके अलावा लैक्रिमल ग्लैंड की सिक्रीशंस जो है वो ड्राई हो जाएगी. तो ड्राई
loss of fiber, loss of taste sensation to the anterior 2/3 of the tongue, ये होंगे अगर फेशियल कैनाल के अंदर फेशियल नर्व डैमेज हो रही है। और उसके अलावा ऑब्वियसली उसमें बाहर इससे नीचे के जो फाइबर्स हैं अगर वो भी अफेक्ट हुए हैं, क्योंकि फेशियल नर्व ये फाइबर सारे कैरी करती आ रही है मोटर, तो फिर मसल्स ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन विल आल्सो बी अफेक्टेड, व्हिच इज यूजुअली द केस। अब the third nerve which emerges from the intracranial या ईयर के अंदर जो पार्ट है, मिडिल ईयर के अंदर, उसमें से जो थर्ड निकलेगी वो कॉर्डा टिम्पनाई है। इट विल ट्रेवल थ्रू द लिंगुअल नर्व, और लिंगुअल नर्व से इसने फिर सबमेंडिबुलर गैंग्लियन में रिले करना है। सबमेंडिबुलर गैंग्लियन से फिर इट विल supply the sublingual and submandibular gland. The secretomotor fibers इनको जाएंगे और anterior 2/3 of tongue से, उसके अलावा पैलेट से वो जो फाइबर्स हैं सारे, और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी, स्पेशली द हार्ड एंड सॉफ्ट पैलेट, उससे भी जो ग्लैंड्स हैं उन सारों के फाइबर्स भी इसी में ट्रेवल कर रहे हैं। फिर उसके बाद इस it came out through the stylomastoid foramen. Stylomastoid foramen से बाहर आते ही एक auricular branch होगी जिसका नाम posterior auricular था, और उसके अलावा posterior belly of the digastric और stylohyoid को ये branches चली जाएगी। फिर इसकी terminal branches हो गई after passing through the parotid gland, और terminal branches temporal, zygomatic. These are the buccal branches, then marginal mandibular branch, and then the cervical branch. So this is the revision of the facial nerve. इसमें भी यही ब्रांचेस लिखी हैं, लेकिन मैंने ये डायग्राम भी इसलिए डाल रही है क्योंकि कुछ बच्चों की रिटेंशन पावर स्ट्रांग होती है बाय लुकिंग एट द पिक्चर, और कुछ की या डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, और कुछ की जो है जब तक वर्ड्स लिखे हुए ना हो तो उनको याद नहीं रहता। इसलिए मैंने दोनों तरह के डायग्राम्स डाली हैं। इसमें से मैं जल्दी से आपको करवा देती हूँ रिवाइज। Facial nerve passing through the internal auditory meatus, then passing through the facial canal. While passing through the facial canal, the first nerve is the greater petrosal nerve, which comes through the hiatus in the facial canal. Deep petrosal के साथ मिलके इसने nerve to the pterygoid canal बना दिया। nerve to the pterygoid canal से pterygopalatine ganglion में चली गई। pterygopalatine ganglion से इसने palate को taste, nasal and oral mucus glands और secretions को सबको supply कर दिया through the branches of the maxillary division of the trigeminal nerve। और उसके अलावा इसने zygomatic branch of the maxillary division से fibers जो है lacrimal gland के लिए जो destinate थे वो hand over कर दिए to the lacrimal branch of the ophthalmic division of trigeminal nerve for supply to the lacrimal gland। अब second nerve थी nerve to stapedius, और third nerve cauda tympani जो कि इसमें नहीं बनी हुई, या ये है, सॉरी मुझे लगता है मैं थक गई। ये कॉर्डा टिम्पनाई नर्व, और कॉर्डा टिम्पनाई फिर जो it will be carrying special sensory fibers from the anterior 2/3 of the tongue and secretomotor fibers through the branches of the maxillary nerve again। और maxillary के किस तरह से कि ये pterygopalatine ganglion में जाएगी। pterygopalatine say ये lingual के through it will be going to the submandibular ganglion, and from the submandibular ganglion it will supply the sublingual and submandibular glands। उसके बाद इसके motor component to the these 5 branches which are going to supply the muscles of the facial expression, and these are also the branchiomotor component, because एक ये branchiomotor component हो गया, और दूसरा जो posterior belly of the digastric और stylohyoid को supply कर रहा है वो भी branchiomotor component है।
उसके बाद पोस्टीरियर ऑर्डिकुलर, ये हम काफी दफा डिस्कस कर लिए हमने कि ऑक्सीपिटल वैली ऑफ ऑक्सीपिटल फ्रंटालिस को सप्लाई करेगी और स्किन ओवर द मास्टोइड प्रोसेस और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के आउटर साइड। आई थिंक आई विल टेक जस्ट 2 minutes ब्रेक और हाँ जी 2 minutes की ब्रेक ले लें, फिर मैं आगे शुरू करती हूँ। Now let's start the vestibulocochlear nerve. It's the 8th cranial nerve, and it also passes through the internal acoustic meatus. It is carrying the special sensory component only. So it is one of the nerves which is linked with the two special senses. One is hearing and the other is the balance sensation. The vestibular component is for the balance sensation, along with few reflexes which are traveling through the proprioceptive impulses, which help in maintenance of the balance. And for hearing, there is special organ, the cochlea, which is receiving the impulses. How the impulses are generated and all that is not in your syllabus. So we'll just talk about the main, the principal areas of the cochlear pathway or hearing pathway. From the cochlea, the fibers, they travel in the cochlear nuclei. There are two cochlear nuclei, dorsal and ventral cochlear nuclei, which are present on either side of the inferior cerebellar peduncle. The dorsal cochlear nucleus is the main one. From here, the fibers travel towards the pons and they relay in the superior olivary nucleus. And if you remember, at the pontomedullary junction, there is a body which is responsible, which is formed by the deposition of the hearing pathway fibers. This is called the trapezoid body. So from the superior olivary nucleus and from the dorsal cochlear nucleus, the few of the fibers deposit in the trapezoid body, and few of the fibers also relay in the nuclei of the trapezoid body. Then they travel as the lemniscus, which is the lateral lemniscus, to the inferior colliculus. And from the inferior colliculus, the fibers are going to the medial geniculate body, and from the medial geniculate body to the temporal area of the temporal lobe of the cerebral cortex, where various auditory areas are located.
ऑडिटरी एरियाज की डिटेल भी आपसे रिक्वायर्ड नहीं होती. You should just know that there are certain areas responsible for development of language, certain areas for memory and recall of the spoken speech and written speech. And उसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा वर्निकीज एरियाज पूछ लेते हैं या ब्रोकाज एरिया पूछ लेते हैं, लेकिन मेन जो hearing की sensation है that goes into the main auditory area, which is present in the temporal lobe of the cerebral cortex and extending into the insular cortex as well. So this is about the cochlear part, vestibular part of the cochlear part of the vestibular cochlear nerve. और जो vestibular part है इसमें भी internal ear से fibers travel करेंगे to the vestibular nuclei. There are 4 parts of the vestibular nuclei: medial, lateral, superior, and inferior, and they are present mainly in the medulla and pons. Actually, they are extending from the medulla towards the pons, and the most expanded part of the nuclei, which is the lateral cochlear and the inferior cochlear nuclei, they are present at the pontomedullary junction, and they are also, you can see them in the floor of the fourth ventricle, in the triangles which are found in the floor of the fourth ventricle by the inferior fovea. And from there, the fibers, vestibular sensations will travel further to different areas of the cortex and to the medial longitudinal fasciculus for attaining the communication which is required by the autonomic nervous system to attain the balance. और main जो nucleus है वो यही vestibular nuclei है, which will give rise to which will receive all the sensations, forming the vestibular component of the vestibulocochlear nerve. Or in the passage, these fibers from the ear, they reach the brain through the internal acoustic meatus. Now the 9th cranial nerve, the glossopharyngeal, 9th, 10th or 11th, ये तीनों cranial nerves, we know they are passing through a very large foramen, which is the jugular foramen, present at the junction of the posterior cranial fossa and the middle cranial fossa, just below the petrous part of the temporal bone. And this nerve has also got a special sensory component and a general sensory component. Special sensory component is regarding the sensations from the posterior 1/3 of the tongue. And then there is a branchiomotor component, or this is the nerve of the 3rd arch. So it is responsible for supplying the muscle which is arising from it, and it is taking part in the formation of the posterior 1/3 of the tongue as well. The arch itself is contributing in the formation of the posterior 1/3 of the tongue. So the taste fibers are being carried by the glossopharyngeal nerve from the posterior part of the tongue is also explaining why this nerve is supplying this area. Then it is, as its name is telling, it is supplying the tongue and the pharynx. So in the pharynx, the inner mucosa and the associated glands of the pharynx, they are supplied by the glossopharyngeal nerve. Then in the neck, the carotid sinus and carotid bodies, and they are the 2 important areas where sensitive receptors are present, which are responsible for maintaining the blood flow, as well as in response to the various pressure changes and in response to the chemical changes regarding oxygen and carbon dioxide. So these sensations are very vital for maintaining the internal milieu of the body, and they are also carried through the glossopharyngeal nerve. Then brachiomotor component, as far as the
nerve supply to the muscle is concerned, so this is just the stylopharyngeus muscle, which is supplied by this nerve and is arising from the pharyngeal arches. Parasympathetic component, mainly in addition to supplying the small glands in the pharynx, in the mucosa of the pharynx, and the main supply is to the parotid gland, and we will depict the whole supply, how it will reach the parotid gland. Again, many nerves will be involved, but glossopharyngeal is the main nerve which is carrying the fibers for supply up till the ganglion. So let's see. Glossopharyngeal, the branches are its tympanic branches, which actually there is a tympanic plexus formed, which is in the internal ear, and the glossopharyngeal nerve is supplying this tympanic plexus, and from the tympanic plexus the lesser petrosal nerve arises. This lesser petrosal nerve then joins the mandibular division of the trigeminal and reaches the otic ganglion. The otic ganglion, I told you before, it is attached to the mandibular nerve as it comes out of the foramen ovale. When it comes out of the foramen ovale, otic ganglion is just attached to it, but the fibers which relay in this ganglion, they are coming through the lesser petrosal nerve. Lesser petrosal nerve is a branch of the glossopharyngeal nerve, which it gives after emerging from the tympanic plexus. And these fibers will travel through the auriculotemporal nerve, which is again a branch of the mandibular division of the trigeminal nerve, and then it will supply the parotid gland. So the fibers which are coming in the otic ganglion are through the lesser petrosal nerve, which is a branch of the glossopharyngeal nerve. Then the motor branch or the branchiomotor branch is the nerve to the stylopharyngeus muscle. The lingual nerve is carrying the sensations from the posterior anterior likha, posterior 1/3 of the tongue. Then few branches of the glossopharyngeal nerve, they are contributing in the formation of the pharyngeal plexus. Pharyngeal plexus ke through it is going to supply the mucous membrane of the posterior wall of the oropharynx and the nasopharynx. So whole of the pharynx, the mucous membrane of the pharynx is supplied by the glossopharyngeal nerve. Obviously, यहाँ आपने note किया होगा कि oropharynx और nasopharynx लिखा हुआ. Ideally speaking, laryngopharynx should have been included, लेकिन laryngopharynx जो supply हो रहा है वो next cranial nerve से हो रहा है, which is the 10th cranial nerve. Then for branches to the carotid sinus, internal carotid artery or common carotid artery के आपको पता है junction पे carotid sinus होगी और carotid bodies भी होंगी. So carotid sinus और carotid bodies के लिए भी branches जो हैं वो इस ही nerve से emerge करेंगी. Now again, the diagrammatic representation of the glossopharyngeal nerve, as it comes out through the jugular foramen. इसका glossopharyngeal का अगर हम brain के अंदर देखें तो इसके nuclei जो हैं motor as well as sensory nuclei वो medulla के अंदर हैं, और intermediate location है glossopharyngeal nerve की as far as the nuclei are concerned. और main nuclei इसके एक तो ये nucleus of tractus salutaris के साथ और फिर nucleus ambiguous में इसके representation है, और ये mainly medulla में ही है. And then as it comes out through the jugular foramen, there are two ganglia
Ganglia are just the collection of nerve cell bodies, and dilatation in the passage of the nerve appear as dilatation in the passage of the nerve. इन दोनों में से emerge करके एक तो इसमें से lateral petrosal nerve निकल आई after forming the tympanic plexus, और lesser petrosal nerve फिर foramen ओवेल के थ्रू ऑप्टिक गैंग्लियन में इसने रिले किया और ऑप्टिक गैंग्लियन से पैरोटिड ग्लैंड को सप्लाई किया थ्रू ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व। उसके बाद इसकी मोटर ब्रांच इन गैंग्लिया में से निकली जो कि स्टाइलोफेरेंजियस को चली गई, और फिर इसकी सेंसरी ब्रांचेस टू द कैरोटिड बॉडीज एंड कैरोटिड साइनसेस, और फिर फेरेंजियल ब्रांचेस हैं जो कि फेरिंक्स को और टंग को और ओरोफेरिंक्स और नेसोफेरिंक्स के एरिया को सप्लाई कर रही है। सो ग्लॉसोफेरेंजियल की मेनली ऊपर की ascending branches और descending branches हो गए, descending branches to the oropharynx and ascending branches to the tongue and oropharynx as well as the nasopharynx. Tenth cranial nerve, again a mixed nerve carrying all the types of fibers, or it is the wandering nerve traveling through the brain and then extensive nuclear distribution in the brain, traveling all the way through the neck, thorax, abdomen. इसलिए सबसे extensively distributed nerve है। इसकी question आमतौर पे इसी component से related होता है कि the nerve which is supplying the areas outside the head and neck area, तो वो फिर यही mainly बनती है। तो इस तरह के questions होते हैं, और उसके अलावा जो एब्डोमेन थोरिक्स के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो वेगस से भी रिलेटेड आ जाते हैं। हेड एंड नेक के एरिया से रिलेटेड इसमें बस ये कंपोनेंट्स का थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, और मेनली द क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू द लैरिंक्स एंड द थायराइड सर्जरी। और वो मेरा ख्याल है शायद ही कोई स्टूडेंट होगा स्पेशली एफसीपीएस का जिसको ये याद ना हो कि रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो है वो वोकल कॉर्ड से नीचे का एरिया सारा सप्लाई कर रही है, वोकल फोल्ड से नीचे, एंड द damage to the recurrent laryngeal nerve results in hoarsening of the voice. hoarseness की symptom दी होती है, और ये बहुत frequently asked question है, और उसमें यही है damage to recurrent laryngeal nerve। और अगर एफोनिया हो गया आफ्टर थायराइड सर्जरी तो इट इज द डैमेज टू द सुपीरियर लैरिंजियल नर्व। और सुपीरियर लैरिंजियल नर्व की एक इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच है, एक एक्सटर्नल लैरिंजियल ब्रांच है। एक्सटर्नल लैरिंजियल ब्रांच जो है मसल्स को सप्लाई कर रही है, और इंटरनल लैरिंजियल ब्रांच जो है म्यूकोसा अबव द वोकल कॉर्ड्स को कर रही है, और क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन को कर रही है, को पियर्स कर रही है। और एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व जो है वो इंफीरियर कंस्ट्रिक्टर और क्रिकोथायरॉइड कर रही है। क्रिकोथायरॉइड के अलावा जो मसल्स हैं लैरिंक्स के वो सारे के सारे रिकरेंट लैरिंजियल से सप्लाई हो रहे हैं। सो दिस इज द मेन पार्ट जो मैंने नीचे का पोर्शन ये सारा लिखा हुआ आपको मेरा ख्याल है बता दिया होगा। दिस इज द फोकस ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड फ्रॉम द कोर्स एंड ब्रांचेस ऑफ द वेगस नर्व। लेकिन हम इसको एक दफा फिर जरा सा देख लेते हैं। इसकी ऑरिकुलर नर्व जो है इट सप्लाइज द स्किन ऑफ द पिन्ना, एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। इस भी ऑरिकुलर नर्व का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ये है कि ये जनरल सेंसेशंस ऑल्सो कैरी कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ कैरिंग दीज सेंसेशंस फ्रॉम द एक्सटर्नल ऑडिटरी meatus एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, अगर आप वैक्स रिमूव करते हुए ईयर से देयर इज अ थ्योरेटिकल डेंजर ऑफ going into vagal reflex, और उसकी वजह से ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। So this is because of the auricular nerve which is supplying this area के wax remove करते हुए vagus nerve stimulate हो सकती है। फिर इसके pharyngeal nerves हैं which are going to supply the epiglottis and laryngopharynx।
and the constrictors of the pharynx, as well as levator villi palatini and palatoclossus and palatopharyngeus and salpingopharyngeus and uvula, and the muscles present in the uvula, which is musculus uvuli. और इसमें भी यही important बात है कि this is the nerve of the sixth arch, और इसलिए ये branchiomotor component है इसका, that it is supplying the constrictors of the pharynx and palatoclossus and palatopharyngeus and salpingopharyngeus. अच्छा, अब उसके बाद ये सुपीरियर लेरेंजियल और रिकरेंट लेरेंजियल ये हमने डिस्कस कर लिए हैं ऑलरेडी. सुपीरियर लेरेंजियल डिवाइडिंग इनटू internal and external laryngeal, or superior laryngeal nerve is in relation to the superior thyroid artery. Recurrent laryngeal nerve comes in relation to the inferior thyroid artery during the thyroid surgery on the thyroid gland. It is the recurrent laryngeal nerve is supposed to be ligated close to the gland, and the superior thyroid artery is supposed to be ligated distant to the gland during surgery. Now, this is the revision part, और इसके लिए mind थोड़ा सा मैं भी fresh कर लूँ और आप भी fresh कर लें कि this is about the autonomic ganglia. इन्हीं पे based questions बहुत ज़्यादा होते हैं, और यही सबसे tricky part है जो जब आप जितनी दफा पढ़ते हैं आपको लगता है ये बिल्कुल आपको पक्का याद हो गया, लेकिन फिर भूल जाता है. So this is one part of the anatomy which needs revision over and over again. And these are the 4 parasympathetic ganglia. Ciliary ganglion, which is coming attached to the nasociliary की lacrimal branch के साथ, and it is supposed to supply the sphincter pupillae and ciliary muscle, और इसमें से जो nerves arise करती हैं वो short ciliary nerves है, और इसमें से ये parasympathetic supply है to these muscles. तो इसमें sympathetic supply है वो dilator pupillae को जाएगी, and it is coming through the branches around the internal carotid artery. So this black line is representing the sympathetic fibers to any of the parasympathetic ganglia, और जो इसके अंदर ये blue fibers आ रहे हैं ये ऑप्थेल्मिक नर्व के फाइबर्स हैं, और ये रिले किए हुए बगैर भी ग्लैंड में से गुजर जाते हैं, एंड दीज आर द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स जो कि they are coming to the gland. In the case of ciliary ganglion, they are coming from the parasympathetic nucleus of the oculomotor nerve, which is the danger baseball nucleus present in the midbrain, just lateral to the main principal motor nucleus of the oculomotor nerve, and it will come in the ganglion, and the postganglionic fibers will supply these two muscles. अब उसके बाद ये आ गया टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन. टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन comes in the passage of the maxillary nerve. maxillary nerve से ये attached है, और maxillary nerve में से असल में इसमें जो parasympathetic fibers आ रहे हैं, they are coming through the nervus intermedius, which is the carrying the sensations through the greater petrosal nerve. Greater petrosal nerve will meet with the sympathetic fibers which form the deep petrosal nerve. ये दोनों greater petrosal and deep petrosal will form the nerve of the pterygoid canal. इससे ये टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन में आएंगी. टेरिकोपैलेटाइन गैंग्लियन is present in the टेरिकोपैलेटाइन fossa. उसमें वो attached है by to the maxillary nerve, और maxillary nerve की branches के through it will travel through the zygomatic nerve of the zygomatic branch of the maxillary nerve, and then through the lacrimal branch it will go to the lacrimal and nasal and palatal glands of in relation to the eye and nose and palate, along with the distribution of the branches of the maxillary nerve.
उसके बाद तीसरा गैंग्लियन आ गया विच इज द सबमैंडिबुलर गैंग्लियन. सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में भी फाइबर्स नर्वस इंटरमीडिएट्स के थ्रू ही आ रहे हैं, लेकिन इट इज अटैच्ड टू द लिंगुअल नर्व. ये लिंगुअल नर्व के थ्रू आएंगे फाइबर्स इसमें, और सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में से रिले करके these fibers will supply the postganglionic fibers will supply the submandibular and sublingual glands. और इसमें sympathetic fibers जो हैं वो external carotid artery की branches के थ्रू, और मेनली यहाँ पे आ जाता है कि एक्सटर्नल कैरोटिड की कौन सी ब्रांच से आ रहे हैं, ये आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता, ये आमतौर पे ये मिडिल मेनिंजियल के थ्रू आ रहे होते हैं. फिर उसके बाद लास्ट गैंग्लियन आ गया विच इज द otic ganglion. Otic ganglion attached है with the mandibular division of the trigeminal nerve, but the fibers which are coming in it are coming through the glossopharyngeal nerve. The parasympathetic fibers, it's the nuclei are present in the mainly in the मेडुला ऑब्लोंगेटा, लेकिन पॉन्स के लोअर पार्ट तक भी कई दफा एक्सटेंड करते हैं ये न्यूक्लियाई, और दे come and relay in the otic ganglion, और otic ganglion से फिर जो फाइबर्स, और ये जो फाइबर्स हैं ग्लॉसोफेरिंजियल के, ये लेसर पेट्रोजल नर्व के थ्रू आएंगे, और इसके अलावा जो सिंपैथेटिक फाइबर्स भी जो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के अराउंड जो है, they will come and relay in the otic ganglion, and the fibers to the parotid gland will then travel through the auriculotemporal. So this is revision of the parasympathetic ganglia which are associated with the cranial nerves. और काफी सारे questions सिर्फ इस diagram में से आंसर हो जाते हैं. Now the vagus nerve, ये हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस कर लिया है. इसकी सिर्फ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वंस अगेन, सुपीरियर गैंग्लियन, इंफीरियर गैंग्लियन जैसे ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व का था, इसी तरह से when it comes out through the foramen, jugular foramen, it is it and the nerve fibers they relay in the ganglia which are the two ganglia, superior and inferior, और इसमें से फिर एक pharyngeal branch निकलेगी, एक superior laryngeal और फिर recurrent laryngeal, और उसके अलावा जो carotid sinus को, and then it will, अच्छा sorry ये मैं आपको carotid sinus को ये भी कर रही है, और glossopharyngeal में भी हमने यही देखा. तो मेरा ख्याल है इनमें से एक जो है वो कैरोटिड बॉडीज को कर रही है और एक कैरोटिड साइनस को कर रही है. So I'll have to check. इस डायग्राम में इसी तरह है. Anyway, और वेगस नर्व खुद फिर ट्रेवल कर जाएगी इनटू द थोरैक्स, और उसके बाद it will participate in the I don't think it's इसमें ये वाला कंपोनेंट, इनफैक्ट ये कंपोनेंट जो है pharyngeal plexus से रिलेटेड है. Because sorry to interrupt Dr. Afia, there is some request in the chat box कि please is there any MCQs? All points are MCQs. हाँ जी, कि lecture is very good, Jazakallah, good lecture, लेकिन they need some MCQs. जी, I will be coming to that. I know this becomes very boring because there is so much. It's not boring, very interesting. वो लोग कहने 30th नवंबर को हमारे एग्जाम है और हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि इतना सब पढ़ना. They want shortcut. ये मैं बिल्कुल आपको अभी, shall we go on to the MCQ straight away?
या ये पता नहीं, पूछ रहे हैं आप लोग, व्हाट डू यू से? जी बताइए, shall we go on to the आंसर straight away? Yes, ma'am. मैम 11 और 12 थोड़ा शॉर्ट करवा के फिर डायरेक्टली एमसीक्यू पे नर्व्स भी कंप्लीट हो जाएंगी। एमसीक्यू पे नर्व्स आके फिर कर दूं कंप्लीट। मुझे पता है यहाँ तक आके तो मुझे बोलते बोलते मैं थक गई हूँ, तो आपका सुनते सुनते कैसे मैम absorb कंप्लीट कर दें। मैम कंप्लीट कर दें तो टॉपिक ही कंप्लीट हो जाएगा, भले शॉर्ट शॉर्ट खाली ओवरव्यू दे दें उनका। जी मैं वही जहाँ रिवीजन आती है स्लाइड्स की उस पे नहीं आती, और मैं ये जल्दी से एक्सेसरी का बता देती हूँ। 11th cranial nerve जो है इट इज अगेन पासिंग थ्रू द जुगुलर फोरामेन, और ये मेनली मोटर नर्व है, और इसमें थोड़े से पैरासिम्पैथेटिक कंपोनेंट भी है विच इज मेनली सप्लाइंग द sternocleidomastoid muscle, और there are two roots of this cranial nerve, cranial root and spinal root. They unite with each other, and obviously the spinal root is coming upward through the foramen magnum, and then it joins with the cranial root, and they take exit after joining with the branch of the with the 10th cranial nerve through the jugular foramen, and is distributed mainly to the two muscles, sternocleidomastoid and trapezius. And the MCQs are usually related to the component of this component, that the sternocleidomastoid muscle का function बताया होगा कि you can't turn the face to the opposite side, या trapezius का shrugging of the shoulder में role, या rotation of the shoulder joint में role, and then it is asked that which nerve would be severed or injured, तो उसमें फिर जाहिर है accessory nerve is injured. या एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि which cranial nerves, nuclei of which cranial nerves are extending into the upper part of the spinal cord as well. So these are two cranial nerves. One is the trigeminal, and उसका spinal nucleus जो है वो upper 4 segments of spinal cord में extend करता है, and the second one is the accessory. So these are the two areas in which the questions are asked from the accessory nerve. Last is the hypoglossal nerve. Hypoglossal nerve comes through the hypoglossal canal, और इसका generate somatic motor component है only. It's a purely motor nerve, so all the muscles of the tongue except the palatoglossus is supplied by the hypoglossal nerve, और इसमें ये सारे स्टाइलोग्लॉसिस, हायोग्लॉसिस, जीनियोग्लॉसिस, जीनियोहॉइड और थायरोहॉइड, और इसमें आपने हेड एंड नेक के एरिया में एंसा सर्वाइकलिस भी पढ़ लीजिएगा कि वो किस तरह से C1 और C2 भी कई दफा उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उनसे कम्युनिकेट करके और एंसा सर्वाइकलिस बनती है। उसमें क्वेश्चंस कुछ उसके ट्रायंगुलर पोस्टीरियर ट्रायंगल से रिलेटेड एंटीरियर ट्रायंगल से रिलेटेड आ जाते हैं, और डायरेक्टली आंसर सर्वाइकलिस से आ जाते हैं कि इट इज मेनली in the passage of the hypoglossal nerve, or mainly it is going to supply the muscles of the tongue. और अगर ये इंजर हो तो the tongue deviates to the same side. इसमें मेन बात ये है कि it's not, the tongue won't deviate to the opposite side, it will deviate to the same side, because the functioning muscle will pull the tip of the tongue towards their side. अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और अभी इसके बाद एक और भी लेंथी टॉपिक है जो कि मैं बहुत ही ब्रीफ आपको बताऊंगी, क्योंकि आप कभी जाहिर माइंड अब थक गया होगा. We'll go on to the MCQs now. A sharp instrument passing through the supraorbital fissure would most likely sever which of the following structures? What is the answer? Abducent. क्योंकि बाकी अभी आपको ताजा ताजा याद है कि कौन सी चीज कहाँ से गुजर रही है, लेकिन इसमें सरप्राइजिंगली बहुत सारे बच्चे ऑप्टिक नर्व लिख देते हैं. Observing the protruded tongue test, the competence of the innervation of the muscles of the tongue, a deviation of the protruded tongue of the right indicates damage to the, ये मैंने अभी आपको बताया कि same right side, hypoglossal nerve. right hypoglossal. Following a tonsillectomy, your patient reports numbness on the back of the tongue and a reduced sensation of the taste. After examination, you confirm a loss of general sensation and taste from the posterior 1/3 of the Loss tongue. of You fingers. suspect injury to the Loss of fingers.
ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लॉसोफेरेंजियल, लेकिन कई लिंगुअल नर्व, जी लिंगुअल नर्व। नहीं बेटा, लिंगुअल इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे खास तौर पे बता दिए बैक ऑफ द टंग। बैक ऑफ द टंग क्योंकि कहा है, अगर पूरी टंग कहा होता तो फिर लिंगुअल नर्व के चांसेस बनते थे। दूसरा उसमें ये भी बता दिया कि टॉन्सिलेक्टमी हुई है तो पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर जो इसका कोर्स है उसमें भी ये डैमेज हो सकती है। खैर उसमें लिंगुअल भी डैमेज हो जाती है, यू आर राइट, लेकिन ये जो बैक ऑफ द टंग कह दिया है ना, तो उसकी वजह से लॉस ऑफ जनरल सेंसरी टेस्ट फ्रॉम द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग यहाँ बता दिया। तो इसलिए मैम आप ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ओके मैम। हाँ जी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व इज द आंसर। Following thyroidectomy, hoarseness of the voice may occur. The condition is caused by injury to the कौन सी है? Recurrent laryngeal nerve। हाँ, और अगर इसमें आता है hoarseness की बजाय एफोनिया, यानी आपकी आवाज निकल ही नहीं रही, तो फिर कौन सी होनी थी? सुपीरियर 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 लेरेंजियल। सुपीरियर लेरेंजियल। हाँ जी, फिर आता है कि एक्सटर्नल लेरेंजियल होना चाहिए या सुपीरियर लेरेंजियल, लेकिन मेनली जो उसका टॉन्सिलेक्टमी में एक्सटर्नल लेरेंजियल से ज्यादा सुपीरियर लेरेंजियल के डैमेज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। प्लस ये आमतौर पे सिनेरियो में फिर ये भी लिख दिया होता है कि जो सिक्रीशंस भी हैं वो भी डिस्टर्ब्ड हैं पैलेट में, तो इससे वो पता चल जाता है कि इंटरनल लेरेंजियल का भी कोई ना कोई साथ लिखा हुआ होता है। मैम प्लीज रिपीट करते हैं। बेटे इसमें ये कह रही हूँ कि सुपीरियर लेरेंजियल की ही ब्रांच है ना एक्सटर्नल लेरेंजियल। सुपीरियर लेरेंजियल डिवाइड्स इनटू इंटरनल लेरेंजियल एंड एक्सटर्नल लेरेंजियल। तो अगर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व डैमेज होगी तो एफोनिया होगा बिकॉज मसल्स काम नहीं कर रहे, और प्लस इंटरनल लेरेंजियल भी अफेक्ट हो रही होगी। तो इसलिए इंटरनल लेरेंजियल का जो उसने म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द लैरिंक्स अबव द वोकल उसका भी कोई सिम्टम्स साथ दे दिया होता है। अगर ये पूछना चाह रहे हो कि सुपीरियर लेरेंजियल है या इंटरनल लेरेंजियल है या एक्सटर्नल लेरेंजियल, तो उसमें सिनेरियो ऐसे देते हैं कि जिसमें वो कंपोनेंट भी कवर हो जाए ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें कि इज इट द सुपीरियर लेरेंजियल और वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द सुपीरियर लेरेंजियल। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। मैम रिकरेंट लेरेंजियल की अगर होगी लीजेंस तो फिर क्या क्या आ सकती हैं सिनेरियो में? बेटा फिर उसमें बस सिर्फ फोर्सेस ऑफ वॉइस दी होती है, या एक मैंने आगे और डाला हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। उसमें ये लिखा हुआ है कि जो आर्टरी है उसको लाइगेट किया गया था अवे फ्रॉम द ग्लैंड, तो उसमें भी फिर इन रिकरेंट लेरेंजियल के इंजर होने का चांस ज्यादा होता है। वो मैंने एमसीक्यू है, आगे आ जाएगा। A patient has developed medial strabismus. Which cranial nerve is involved? 6 फिर मोटर थर्ड क्यों? क्योंकि मैम वो मोटर जो फंक्शन है वो है डिसमिस है। सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई कर रही है इसलिए। नहीं बेटे, देखिए मीडियल स्ट्रेबिस्मस का मतलब ये है कि आई मीडियल साइड पे टर्न हो गई है। मीडियल साइड पे टर्न हुई है अगर मीडियली, यानी एडक्शन हो रही है। एबडक्शन ना हो अगर तो दूसरी वाली साइड का मसल, अगर एक मसल पैरालाइज होता है तो उसका ऑपोजिट मसल अपनी तरफ पुल कर लेता है। इसका मतलब ये है कि मीडियली आई बॉल टर्न कर रहा है तो लेटरल पुल खत्म हो, और लेटरल पुल किसने करनी है? लेटरल रेक्टस। एब्ड्यूसेंट। तो इसलिए दिस इज द क्रेनियल नर्व 6। ओके। A person took some sweet dish. He used his tip of the tongue to taste it. Which nerve carried the sensation on this case? Glossopharyngeal, फेशियल नर्व। facial nerve. ठीक है, और फेशियल का कॉर्डा टिम्पनाई कंपोनेंट। कई दफा इसमें फिर फेशियल भी दिया होता है और कॉर्डा टिम्पनाई भी दिया होता है। तो अगर यू हैव टू चूज द बेस्ट रिस्पॉन्स, तो फिर बेस्ट रिस्पॉन्स में कॉर्डा टिम्पनाई पिक करेंगे।
While removing an impacted mandibular third molar, the oral surgeon must warn the patient of possible lasting numbness of the tip of the tongue. This loss of general sensation is due to damage to the Order tympani. general sensations ले जा रही है cauda tympani. Lingual nerve. लिंगुअल नर्व, Lingual nerve. Lingual nerve. ये थोड़ा सा आपको सोचने पे मजबूर करता है क्वेश्चन, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आई वुड से. लिंगुअल नर्व इसलिए क्योंकि जनरल सेंसेशंस फ्रॉम द एंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग इज कैरिड बाय लिंगुअल नर्व एंड स्पेशल सेंसेशंस फ्रॉम द कॉर्डा टिम्पैनी. तो उसने वो ये भी बता दिया कि टेस्ट भी खराब हो सकता है, नहीं ये नहीं बताया, लेकिन मेन यही कि नमनेस क्यों होगी. मैम नमनेस स्पाइनल उसने लगाया तो सॉरी एनेस्थीसिया लगाया था इसलिए होगी ना, तो वो मींस लिंगुअल को ब्लॉक करता है. लिंगुअल को ब्लॉक करता है. ओके मैम. A 22-year-old man presented with swelling of parotid region. He had contracted mumps 5 weeks back, but the swelling did not resolve. He was suffering from agonizing pain in the region of parotid and ear, which increased during chewing. The nerve most likely to be mediated. Auriculotemporal nerve. Temporal. बिल्कुल, ये तो सबको आता है. अच्छा, अब इसमें मैं ये कहूंगी कि अगर पेरोटिड और ईयर में पेन ना लिखी होती, अगर सिर्फ मैम मम्स है ना, मम्स से आइडिया हो जाएगा कि वो पैरोटिड साइड होगा, चीक साइड. बिल्कुल, वो उससे आइडिया हो रहा है. और वो मेस्टाइटिस कराया. जी जी, लेकिन इसमें ना मैं सिर्फ सिनेरियो थोड़ा सा ये पूछ रही हूँ कि अगर इसमें पोस्टीरियर ऑरिकुलर नर्व भी डली हुई होती और इसी एरिया में पेन हो रही होती, तो फिर कौन सी नर्व होती? ऑरिकुलर टेम्पोरल के अलावा पोस्टीरियर ऑरिकुलर भी इसी सिनेरियो में डल सकती. Posterior auricular. फेशियल नर्व होती. हाँ, फेशियल होती और फेशियल की पोस्टीरियर ऑरिकुलर ब्रांच होती. ठीक है, क्योंकि फेशियल भी उसमें आ रही है और ईयर के थोड़े से एरिया को, और उसमें होता है कि नमनेस हो रही है और साथ पेन हो रही है. और इसी किस्म का सिनेरियो फिर जिसमें के मम्स का जिक्र नहीं होता लेकिन पेन होता है, तो आपको ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया से डिस्टिंग्विश करना होता है कि ट्राइजेमिनल की डिस्ट्रीब्यूशन में पेन तो नहीं है. और यहाँ पे अगर ये लिखा होता कि पेरोटिड ग्लैंड की, इसी से पेन की बजाय अगर लिखा होता है कि पेरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो गई हैं, तो फिर कौन सी नर्व होती? Glossopharyngeal. फिर भी ऑरिकुलोटेम्पोरली होती. फिर भी ऑरिकुलोटेम्पोरली. A patient complains of dryness of eyes. On examination, there was decreased secretion of lacrimal gland. The most likely ganglia involved is Pterygopalatine. सिलियरी. भी कोई बोला था सिलियरी क्यों होगा या नहीं होगा? सिलियरी सिलियरी गैंग्लियन की सिक्रीटोमोटर फाइबर्स नहीं है, उसके जो है वो कंस्ट्रिक्टर प्यूपली और सिलियरिस मसल को है. अगर वो सिलियरी रिफ्लेक्सेस होती ना, प्यूपिलरी लाइट रिफ्लेक्स या कुछ, तो उससे रिलेटेड है सिलियरी गैंग्लियन. यहाँ पे सिक्रीशंस हैं टू द लैक्रिमल ग्लैंड, और लैक्रिमल ग्लैंड में टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन से थ्रू इट्स जाइगोमेटिक ब्रांच फिर लैक्रिमल नर्व के थ्रू इसमें आ रहे हैं फाइबर्स. और इसमें इससे पीछे कहाँ से आ रहे हैं? टेरिगोपैलेटाइन गैंग्लियन में. आप जब सो गए होगे दरमियान में लेक्चर में, तो वो चीजें मैं Nervous intermedius. फेशियल नर्व से कॉर्डा टिम्पैनी से नर्वस इंटरमीडिएट. मैम ऑप्टिक गैंग्लिया का थोड़ा आप रिकॉल करेंगी फंक्शन? ऑप्टिक गैंग्लियन में बेटा ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के फाइबर्स होते हैं इंफीरियर सैलिवेटरी न्यूक्लियस से,
ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व टिम्पैनिक प्लेक्सिस के थ्रू लेसर पेट्रोजल नर्व देती है, लेसर पेट्रोजल नर्व फिर ऑप्टिक गैंग्लियन में आती है. These are secretomotor fibers for supply to the parotid gland. And optic ganglion is attached to the mandibular division of the trigeminal nerve. As the mandibular division of trigeminal nerve comes out through the stylomastoid foramen, through the foramen ovale, तो foramen ovale के बिल्कुल नीचे optic ganglion पड़ा हुआ है, attached to the mandibular division. वहां पे फाइबर्स फिर रिले करेंगे और इसके अलावा इसमें सिंपैथेटिक फाइबर्स आएंगे फ्रॉम द प्लेक्सिस अराउंड द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी और फिर ये फाइबर्स ट्रेवल करेंगे थ्रू द ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व. यानी मैंडिबुलर के साथ ही अटैच था ना गैंग्लियन, तो फिर मैंडिबुलर नर्व के थ्रू ही पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स सिक्रीटोमोटर फाइबर्स फॉर सप्लाई टू द पेरोटिड ग्लैंड पास करते हैं और वो ऑरिकुलोटेम्पोरल के थ्रू फिर पेरोटिड ग्लैंड में सप्लाई हो जाएंगे. फिर मैम इसका लीजन क्या कॉज करेगा अगर इसमें होगा तो? इसका लीजन अगर कॉज करेगा तो पेरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाएंगी ना, सलाइवा प्रोड्यूस होना कम हो जाएगा. ओके मैम, थैंक यू. ओके. अच्छा, अब अगर सलाइवा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सबमेंडिबुलर रीजन में भी अगर प्रॉब्लम हो, सबमेंडिबुलर गैंग्लियन से रिलेटेड या सबमेंडिबुलर ग्लैंड से रिलेटेड, तो आपने डिस्टिंग्विश करना होता है और वो आम तौर पे डिस्टिंग्विश करने के लिए कोई ना कोई सिनेरियो में चीज ऐसी डाली होती है जिससे आपको समझ आ जाए कि ये पेरोटिड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो रही हैं या सबमेंडिबुलर और सबलिंगुअल की हो रही है. ओके मैम, वो सीरस और उसका बताएंगे ना, म्यूकस है या सीरस? हाँ, नहीं वो तो नहीं बता सकते, सलाइवा तो कम ही हो रहा होता है, उसके साथ कोई बता देंगे कि किस जगह पे कोई चोट लगी है जिससे आइडिया हो जाए कि पेरोटिड के करीब है, या अगर सबमैंडिबुलर गैंग्लियन में जो फाइबर्स आ रहे हैं उनसे रिलेटेड. आप ये जो गैंग्लिया वाली डायग्राम थी उसको एक दफा फिर एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा, फिर वो सारे चीजें वो कवर हो जाती है. Patient comes with complaint of diplopia for 2 months. On examination, there is medial squint and extorsion of the eyeball. अब मैंने यही बताया था आपको कि इंटॉर्शन, अब देखिए मीडियल स्क्विंट है यानी वही कि मीडियली चला गया है आईबॉल और साथ एक्सटॉर्शन हो गई. एब्ड्यूसेंट, ऑक्यूलोमोटर, एब्ड्यूसेंट नहीं बेटा, मैम कॉक्लियर, देखते हैं इंटॉर्शन नहीं हो रही, इंटॉर्शन नहीं हो रही और एडक्शन नहीं हो रही और एबडक्शन नहीं हो रही. एबडक्शन एंड ठीक है, और एक्सटॉर्शन हो गई है, इसका मतलब है इंटॉर्शन नहीं हो रही. तो इंटॉर्शन जो मसल कर रहा है वो ओब्लीक मसल है और इंटॉर्शन इज सुपीरियर ओब्लीक. सुपीरियर ओब्लीक इंटॉर्शन करता है और एबडक्शन करता है. ठीक है, तो इसलिए द आंसर इज ट्रॉक्लियर नर्व. यस मैम. A young surgeon operated upon a middle-aged lady for enlarged thyroid and ligated the superior and inferior thyroid arteries as close to the poles as possible. ठीक है, तो इसमें मेन बात क्या है कि inferior thyroid artery को जो कि recurrent laryngeal nerve के साथ होती है distal to the gland ligate करना होता है. ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट ये दिया गया है कि उसको एज क्लोज टू द पोल्स कर दिया लाइगेट. तो इसका मतलब है रिकरेंट लैरिंजियल नर्व के डैमेज होने का खदशा है. आफ्टर 2 वीक्स फिर आगे और आसान कर दिया सवाल को
कि lady presents with persistent hoarseness. The most likely cause could be injury to the recurrent larynx. ठीक है, लेकिन अगर इसमें जो है ना ये ना दिया होता कि inferior thyroid artery को close to the poles ligate किया है, तो आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत पड़ सकती थी, अब नहीं पड़ती। मैम होर्सनेस सबसे बड़ा हिंट है ना, होर्सनेस, हाँ जी, होर्सनेस भी बहुत बड़ा हिंट है, ये दोनों बहुत मेजर हिंट्स हैं। और फिर अगर हम बाकी चीजें देखें, वैसे जस्ट फॉर डिस्कशन से, तो लेरिंजियल एडिमा इतनी देर से नहीं डेवलप होता, वो ये इसमें बता दिया 2 वीक्स के बाद। तो इसका मतलब है कि नर्व डैमेज है जो आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस कर। लेरिंजियल एडिमा इमीडिएटली होता है, और सोर थ्रोट के फिर और कोई सिम्टम्स होने चाहिए थे, और वेगस नर्व का डैमेज हो अगेन फिर और भी सिम्टम्स होने चाहिए। Optic nerve fibers terminate in the lateral geniculate या optic radiation या occipital cortex या dentate gyrus। lateral geniculate body, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी। हाँ जी, क्योंकि वो पहले यहाँ टर्मिनेट करेंगे, उसके बाद वो आगे ट्रेवल करेंगे, सारे फाइबर्स वहां रिले करके जाते हैं। इससे बड़ी तो बहुत सीधा सवाल है। The nerve most likely to be involved is facial. अच्छा, अब इसमें अगर सिर्फ ये लिखा होता, एंटीरियर पार्ट ऑफ टंग भी ना लिखा होता, और सिर्फ ये होता कि टेस्ट बिटर टेस्ट was unable to differentiate bitter taste, फिर maxillary होता, फिर क्या आंसर होना था? ट्राइजर में नहीं, वो maxillary nerve, glossopharyngeal था आंसर, क्योंकि बिटर टेस्ट जो है वो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से ज्यादा कम्युनिकेट होता है। ठीक है, और उसके अलावा अगर नहीं सोच रही हूँ और क्या इसमें क्वेश्चन बन सकता है। वेगस का बिल्कुल पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट ऑफ द टंग होता है ना, और साथ यूवुला से और पैलेट से वो वेगस लेके जाती है स्पेशल सेंसरी फाइबर्स भी, तो उसका, लेकिन जाहिर है वो बहुत रेयर सी बात है, इसलिए नहीं देखते इसमें। 50-year-old woman complained of fever, excruciating pain in left eye and headache. On examination, the physician found vesicles on the upper eyelid, forehead, nose, medial to the left eye. It was diagnosed as herpes zoster infection. The nerve most likely to be involved is nasociliary, what? supraorbital, supraorbital, Why? because cutaneous supply. Ma'am, ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve. Ophthalmic nerve is the nerve. right answer. वो इसलिए बेटे क्योंकि अगर सिर्फ नेजोसिलियरी होती तो नेजोसिलियरी के डिस्ट्रीब्यूशन में जो ये आई का अपर लिड आईलिड का एरिया नेजोसिलियरी नहीं कवर कर रही उसकी कोई ब्रांच। ठीक है, और फिर एक और बात ये भी है जो आपका क्लिनिकली भी आ जाती है कि हर्पीज की इन्फेक्शन नर्व ट्रंक को आमतौर पे इन्वॉल्व करती है, एक ये बात। फिर दूसरा ये कि फोरहेड का एरिया भी कवर किया हुआ है। ठीक है, फाउंड वेसिकल्स ऑन द अपर आईलिड फोरहेड, तो फोरहेड का मतलब है सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर भी आ गए। तो सुप्रा ऑर्बिटल और सुप्रा ट्रॉक्लियर जो हैं वो फ्रंटल की ब्रांचेस हैं, तो इसलिए वो नेजोसिलियरी की ब्रांचेस नहीं है। और अगर लैक्रिमल नर्व कहें तो लैक्रिमल ने लैटरल पार्ट ऑफ अपर आईलिड को करना है सप्लाई, इसलिए मेन ट्रंक इज एट फॉल्ट। ठीक है, क्योंकि वाइड एरिया है। समझ आ गई इस बात की? यस मैम। Answer is yes, ma'am. जी बेटे,
मैम आपसे पूछना है कि जो बिटर टेस्ट है वो ग्लोसोफेरेंजियल हम टिक करेंगे उसके लिए। जी, बिटर अगर सिर्फ बिटर दिया हुआ है ना, और ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा पार्ट ऑफ टंग है, जी जी ठीक है, अगर तो पार्ट क्योंकि बिटर टेस्ट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, और वो एंटीरियर 2/3 से भी थोड़ा सा कम्युनिकेट जरूर हो जाता है, क्योंकि जब वो स्प्रेड करता है तो वहां से भी, लेकिन बिटर सेंसेशन जैसे सॉल्ट की जो सेंसेशन है वो थ्रू आउट द टंग होते हैं उसके रिसेप्टर्स। जी मैम। अब ये जो मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो सर्कस टर्मिनलिस के एंटीरियरली है ना टेस्ट बड्स, लेकिन वो जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं बाय पुटिंग द मटेरियल और एनी पार्ट ऑफ द एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग। लेकिन जो बिटर का टेस्ट है ना वो पोस्टीरियर साइड से ज्यादा जल्दी पिक होता है, तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से बिटर टेस्ट के रिसेप्टर ज्यादा है। इसलिए तो अगर ये चेक करना चाह रहे हो ना कि आपको ये पता है कि टेस्ट कहाँ से ज्यादा पिक होता है, जैसे स्वीट का टेस्ट जो है वो टिप ऑफ द टंग से ज्यादा पिक होता है, सॉल्ट थ्रू आउट द टंग पिक होता है, और बिटर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग से पिक होता है ज्यादा। तो मैम फिर नर्व कौन सी हम करेंगे इंक्लूड बिटर के लिए? इन दैट केस ग्लॉसोफेरेंजियल आएगी। ओके मैम, थैंक यू। लेकिन अगर उसमें दिया हुआ है कि एंटीरियर 2/3 पे लॉस ऑफ टेस्ट सेंसेशन है, तो चाहे फिर बिटर टेस्ट भी लिखा हो तो वो आपको वो सिनेरियो पूरा पढ़ेंगे जब, तो फिर इन दैट केस फेशियल ही रहेगा आंसर। लेकिन अगर ये नहीं दिया हुआ कि कौन से पार्ट ऑफ टंग और सिर्फ सेंसेशन कही हुई है बिटर, तो फिर आपको वो पॉइंट आउट कर रही है कि ये पोस्टीरियर 1/3 की बात हो रही है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। 65 years old patient presented with hemiplegia and facial paralysis. On examination, lower part of the face is more severely affected with loss of voluntary movements of facial muscles. What could be the site of lesion? Facial canal, petrous temporal, styloid foramen, stylomastoid foramen, supranuclear. नहीं बेटा, Stylomastoid. Facial canal. नहीं बेटे, इट्स द सुप्रान्यूक्लियर लीजन। देखें इसमें दो हिंट्स दिए हुए हैं। एक तो ये कि सुप्रान्यूक्लियर लीजन होता है जब तो होल जस्ट द लोअर हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड, और इंफ्रान्यूक्लियर लीजन में द लोअर हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। तो एक तो ये कि इंफ्रान्यूक्लियर लीजन हो गया, और न्यूक्लियस कहाँ पे है? पॉन्स में है फेशियल का। तो इसलिए न्यूक्लियस से न्यूक्लियस का लीजन है, तो आगे जो फेस के मसल्स की मूवमेंट नहीं हो रही, तो वो तो चाहे सुप्रा न्यूक्लियर हो या इंफ्रा न्यूक्लियर हो, फेस के मसल्स तो अफेक्ट होंगे। लेकिन लोअर पार्ट ऑफ द फेस जब बता दिया ना, तो इसमें मेन कैच ये है कि सुप्रा न्यूक्लियर लीजन में ओनली लोअर हाफ ऑफ द फेस इज अफेक्टेड। और दूसरा हिंट इसमें दे दिया, हेमीप्लीजिया भी साथ हुआ है, ठीक है, तो इसलिए ये हायर अप ब्रेन के लेवल पे प्रॉब्लम। Patient has sustained deep stab wound in his submandibular region. On recovery, his tongue deviates to the right side when he was asked to protrude his tongue. Which of the following nerves is likely to be damaged? Right hypoglossal nerve. Lingual nerve. Left Right hypoglossal nerve. Right hypoglossal nerve is the right answer. वो इसलिए इसमें एक तरह से आपको डिस्ट्रैक्टर डाला हुआ है, ये कह के कि सब मैंडिबुलर रीजन में स्टैब वुंड हुआ है, उससे आपका ध्यान जो है वो लिंगुअल की तरफ जा रहा है, या आप कह रहे हैं कि कोई और जगह पे डैमेज ना हुआ हो। लेकिन सब मैंडिबुलर रीजन से एक तो हाइपोग्लॉसल नर्व नीचे की तरफ से यहाँ से ट्रेवल करती है क्लोज टू द सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सॉरी हाइपोग्लॉसल नर्व, लेकिन वो लिंगुअल नर्व भी ट्रेवल करती है उसी एरिया में। तो इसमें मेन बात ये है कि टंग डिविएट कर रही है टू राइट साइड,
जो कि लिंगुअल नर्व की इंजरी में उसका मोटर कंपोनेंट तो कोई नहीं है। इसी तरह ग्लॉसोफेरेंजियल के जो मोटर कंपोनेंट हैं वो भी टंग की डिविएशन तो नहीं ना एक्सप्लेन कर सकते, तो इसलिए द आंसर इज राइट हाइपोग्लॉसल नर्व। और ये आपने याद रखना है कि सेम साइड पे डिविएट कर। मैम एक क्वेश्चन है। जी बेटा। मैम अगर गैग रिफ्लेक्स का पूछा और रिफ्लेक्स मेंशन हो तो उसमें हम कौन सी नर्व करेंगे? उसमें वेगस। ओके मैम। नहीं सॉरी, गैग रिफ्लेक्स में, हाँ जी वेगस। उसमें कई दफा ये डिपेंड करता है कि अगर तो सिर्फ यूवुला लिखा हुआ है ना, यूवुला को टच करके गैग रिफ्लेक्स चेक कर रहे हैं तो फिर वेगस होता है, और अगर सिर्फ गैग रिफ्लेक्स का हुआ है तो फिर ग्लॉसोफेरेंजियल है। क्योंकि म्यूकस मेम्ब्रेन ओवर द यूवुला एंड मस्कुलस यूवुली, ये वेगस। लेट मी चेक। नहीं बेटा, ग्लॉसोफेरेंजियल होगा क्योंकि गैग रिफ्लेक्स के अंदर द आंसर इज ग्लॉसोफेरेंजियल। मैम ग्लॉसोफेरेंजियल ही है। हाँ जी, ग्लॉसोफेरेंजियल। A patient presents in the emergency with loss of sensation and weakness of the left side. On examination, there was hemiparesis of the left side with loss of sensation and paralysis of the tongue muscles on right side. A diagnosis of impaired blood supply to the medulla was made. वर्टिब्रल आर्टरी। The artery most likely to be involved is, अब इसमें ये जब कह रहा है ना paralysis of tongue muscles, पैरालिसिस ऑफ टंग मसल्स का मतलब है हाइपोग्लॉसल। अब हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस जो है वो किस जगह होता है? मेडुला में। मेडुला में वेंट्रली या डॉर्सली? डोर्सल। हैं वो एंटीरियरली प्लेस्ड होती हैं, वेंट्रली प्लेस्ड होती हैं। जो आपको डायग्राम भी दिखाई थी तो पिरामिड के लैटरली इमर्ज करती है हाइपोग्लॉसल। तो और आप अगर मेडुला की ब्लड सप्लाई आपने और किसी क्लास में पढ़ी होगी तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरीज का आंसर होगा, क्योंकि एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है एंटीरियर 1/3 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड एंटीरियर पोर्शन ऑफ द मेडुला को सप्लाई करती है, लोअर पार्ट ऑफ मेडुला। तो उस एरिया की ब्लड सप्लाई जहाँ पे हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस है एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। सो द आंसर इज एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी। A 15-year-old schoolgirl is found to have a permanently dilated left pupil. This could be due to involvement of facial nerve, oculomotor nerve, ophthalmic nerve, optic nerve, and sympathetic trunk. Sympathetic trunk. Sympathetic trunk. Permanently dilated pupil है ना, तो नहीं बेटे, ये सिंपैथेटिक ट्रैक। सिंपैथेटिक ट्रंक नहीं, ये क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक एक साइड पिपिल है इसलिए। मैम ये ओकुलोमोटर नर्व। ऑक्यूलोमोटर नर्व आएगा। हाँ जी, बी में बी इज क्योंकि देखिए सिंपैथेटिक ट्रंक, सिंपैथेटिक तो सप्लाई करती है ना डायलेटर प्यूपिली को, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कर रहे हैं कंस्ट्रिक्टर प्यूपिली और सिलियरिस को। तो डायलेटर की नर्व सप्लाई तो है, तभी वो डायलेटेड है ना। तो सिंपैथेटिक को कुछ नहीं हुआ, पैरासिम्पैथेटिक को हुआ।
और पैरासिम्पैथेटिक आ रही है ऑक्लोमोटर, पैरासिम्पैथेटिक आ रही है मोटर के एडिंगर वेस्टफॉल से। ऑक्लोमोटर के एडिंगर वेस्टफॉल से, हाँ। So it's the oculomotor nerve. A 40-year-old man has pain felt deep in the face and nose, between the mouth and orbit, to the ear and temporal region. The pain may be due to the lesion of the auricular nerve, facial nerve, glossopharyngeal nerve, maxillary branch of trigeminal nerve, or ophthalmic branch of trigeminal nerve. Maxillary branch of trigeminal nerve. अच्छा, मैक्सिलरी का पूरा एरिया दिया हुआ है और उसकी जनरल सेंसरी सप्लाई दी हुई है कि पेन है। अच्छा, एक मुझे अभी क्वेश्चन ज़हन में आया था, जो जब हम टंग का कर रहे थे ना, टेस्ट फाइबर्स और वो स्वीट और सावर और उसका, तो उसमें एक क्वेश्चन आपके मैंने ये हो सकता है कि अगर हो कि मिर्चें जो हैं वो ज्यादा लग, मिर्चों की फीलिंग नहीं आ रही, तो जो मिर्चें लगती हैं टांग पे, वो कौन सी सेंसेशन होती है? Does anybody know? No sensation. No sensation नहीं? जनरल मैम, मिर्ची की सेंसेशन लग रही है ज्यादा या नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल मिर्चें भी नहीं फील हो रही, टेस्ट आ रहा है, लेकिन मिर्चें नहीं लगती खाने में। बिल्कुल टेस्ट आता है, सॉल्ट भी आ रहा है, बिटर भी आ रहा है, स्वीट भी आ रहा है, सारा टेस्ट आ रहा है, मिर्चें नहीं महसूस हो रही। और नीचे नर्व्स दी हुई हैं, नर्व्स की ऑप्शन दी हुई है, जिसमें ग्लॉसोफेरेंजियल भी है, फेशियल भी है, और लिंगुअल भी है, और वेगस भी है, और एरिया नहीं बताया हुआ टंग का, लेकिन ये कहा हुआ है कि पेशेंट को बिल्कुल खाने में मिर्चें नहीं लगती, वो मिर्चें वैसे भी खा रहे हैं आराम से। नहीं बेटा, ये है मैम लिंगुअल, लिंगुअल है वो, इसलिए क्योंकि फेशियल नर्व की ब्रांच नहीं बेटे, फेशियल नर्व की ब्रांच भी नहीं है। जो इसमें जो कैच है वो ये है कि मिर्चों की सेंसेशन जो है, इट इज जनरल सेंसेशन, इट्स द पेन सेंसेशन, ये इसका टेस्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। मिर्च की सेंसेशन इज स्टिमुलेशन ऑफ द पेन फाइबर्स, और पेन फाइबर्स जनरल सेंसरी फाइबर्स हैं। जनरल सेंसरी जो है वो लिंगुअल नर्व कन्वे कर रही है फ्रॉम द टंग। ठीक है, ठीक है मैम, ठीक, ये नोट कर लीजिए। अच्छा, अब आगे चलें। ये हमने कर लिया मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व का एरिया। इसी तरह मैंडिबुलर का एरिया या ऑप्थेल्मिक का दिया हुआ हो सकता। कंप्रेशन ऑफ ऑप्टिक chiasma by a pituitary tumor causes by nasal hemianopia, बाइटेम्पोरल बायोटेम्पोरल, क्योंकि नेजल फाइबर्स डैमेज हो रहे हैं, और नेजल फाइबर्स के ऊपर जो फील्ड ऑफ विजन आ रही है वो टेम्परल आ रही है दोनों। और ये हेट्रोनाइमस होता है, होमोनाइमस होता है? Homonymous. नहीं, हेट्रोनाइमस होता है। हेट्रोनाइमस का मतलब, होमोनाइमस ये होगा कि अगर एक साइड की नेजल है, दूसरी साइड की टेम्परल। ठीक है, और हेट्रोनाइमस होता है दोनों टेम्परल या दोनों नेजल। ये होमोनाइमस और हेट्रोनाइमस बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। वो ये समझते हैं कि हेट्रोनाइमस का मतलब है एक साइड की नेजल और एक साइड की टेम्पोरल, हालांकि होमोनाइमस का तो एक ही साइड, यानी राइट ही साइड फील्ड ऑफ विजन लेफ्ट आई की, और राइट साइड ऑफ फील्ड ऑफ विजन राइट आई की। इसका मतलब है होमोनाइमस। A 50-year-old man has drooping of right corner of the mouth, flattening of skin fold, and inability to close the right eye or wrinkle the forehead, but no loss of taste. This condition is due to left facial nerve palsy,
right facial nerve palsy, right supranuclear lesion of facial nerve, right maxillary nerve palsy, or tic douloureux? B. Right facial nerve. Left Left facial nerve. facial nerve. Left facial nerve palsy. और इंफ्रान्यूक्लियर नहीं है ये, नहीं ये इंफ्रान्यूक्लियर लीजन है ना, तो इसलिए लेफ्ट फेशियल nerve palsy. अब we are left with how much time? 1:45 हो गए. तो आप लोगों का बेटे आज मुझे नहीं समझ आती कि ये वर्टिकल कैनाल का वर्टिकल कॉलम का भी क्यों लिखा हुआ था टॉपिक. अब इसका फिर क्या किया जाए बेटे, टाइम तो ओवर हो गया. जी डॉक्टर आफिया क्या कंटिन्यू करना या नहीं आप मुझे बताइए